सर एप जोधपुर से, लेकिन अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। जब भी वो आएंगे आगे उनको हम लोग ससम्मान अटेंड करेंगे। अब मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मंच से सादर निवेदन करता हूँ कि वो आकर के भगवान धन्वंतरी को दीप प्रज्वलन कर आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करें। मंचस्थ समस्त अतिथिगण कृपया पधारें। आजा बेटा। कैंडल का कैंडल
वैदिक काल से मिलेट्स के बारे में साहित्य उपलब्ध है। ऋग्वेद में कंगू कंगनी का उल्लेख आता है, यजुर्वेद में और काम आगे बढ़ा, सामवेद में मैन्योर कैसा होगा, कल्टीवेट कैसे किया जाएगा, मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी और ईल्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब कुछ उपलब्ध होता है। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में और हमारे संहिता काल में ये पुष्पित और पल्वित होता चला गया। तो जहाँ तक इतिहास की बात है कि बहुत ही प्राचीन काल से मिलेट्स के बारे में जानकारी थी, इसका प्रयोग था। और इतना ही नहीं, आज हम स्टेपल फूड के रूप में राइस, व्हीट इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को जानते हैं, मगर एक ज़माने का ये स्टेपल फूड है। तो उस स्टेपल फूड को हमने भुला दिया समय के प्रभाव से। तो इसके बारे में आज चर्चा इसलिए है क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित हो चुका है 2021 में। FAO और जो है ना इसके जो है ना 72 कंट्रीज़ के रिकमेंडेशन के बाद, और हम 2023 इंटरनेशनल मिलेट मना रहे हैं। जहाँ तक मिलेट की बात है, एक ज़माना था, और मैं राजस्थान से आता हूँ, तो गरीबों का खाना हुआ करता था। बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है, ज्वार यहाँ की प्रमुख फसल है, और तब कोई गेस्ट आता था तभी गेहूं की चपातियाँ बना करती थी, ऐसा मैं पिताजी से सुनता था। और मेरे टाइम तक आते आते सर्दियों में सभी लोग बाजरा खाया करते थे और गर्मियों में गेहूं जिनको उपलब्ध था वो, नहीं तो थ्रू आउट द ईयर बाजरा का सेवन किया करते थे। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है। कानपुर में HBTU यूनिवर्सिटी है, हर्बर्टपुर बटलर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे युवा पीढ़ियों के लिए नवाचार हुआ है। और वहाँ पे जैसे कि आज की नीड है, अब लोग बाहर जाके स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। तो आपको समोसा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, कुलचा भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, ये सारी चीज़ें अब मिलेट से बन रही हैं। और HBTU में इस पे काम हुआ है। पटना में एक स्टार्टअप शुरू हुआ है OCB केक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और वहाँ पर मिलेट्स से रिलेटेड जितने भी बेकरी उत्पाद हैं वो बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड नवंबर में सेक्रेटरीट में श्री अन्न बेकरी आउटलेट ये संचालित किया जा चुका है। और उत्तराखंड में ही DGCA एविएशन के साथ उत्तराखंड सरकार की एक MOU हुआ है, जिसमें जितनी भी फ्लाइट्स उत्तराखंड में जाएंगी और वहाँ से आएंगी उनमें श्री अन्न के उत्पाद परोसे जाएंगे। चूँकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, संसद में श्री अन्न कैंटीन संचालित है। यूपी में अमृतो के नाम से इसकी ब्रांडिंग हो चुकी है, और प्रीत सिंह और प्रेम सिंह राजपूत हैं, युवा हैं, इन्होंने इसकी ब्रांडिंग की है। और इसके आउटलेट्स में मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब के बिस्किट बेचे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहे, ये चंडीगढ़ में और दिल्ली में भी अपने आउटलेट खोल चुके हैं। रेस्तरां तक मिलेट पहुंच चुका है। यूपी के सीतापुर में मिष्ठान भंडार में बाजरा और मक्का के लड्डू आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ गोंडा में भी बहुत कुछ काम हुआ है। वहाँ पे एक जिला प्रशासन ने अर्गा के नाम से एक स्कीम शुरू की है, जहाँ पर मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ओडिशा में एक सुंदरगढ़ जगह है, वहाँ पर जिला प्रशासन ने मिलेट्स को एक तरह से वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है कुपोषण से लड़ने के लिए। वहाँ पर बाजरा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और बाजरा को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए
मडुआ के लड्डू, जिसे हम रागी मिलेट कहते हैं, इसके लड्डू उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो एक आउटलाइन हम देश भर में देखें, हर जगह काम हो रहा है। हम हर वीकेंड में संडे को पेपर का कोई ना कोई हिस्सा मिलेट से भरा पाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो मिलेट के इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज में मिलेट्स को कहीं ना कहीं वो स्थान दे चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्मॉल सीडेड ग्रुप है और पशुओं और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। स्मॉल ग्रेन्स हैं, हाई प्रोडक्टिविटी एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। एक बहुत अच्छी बात इसकी यही है कि इसको कम समय में उगाया जा सकता है। ऑलमोस्ट 90 डेज में ये फसल रिपन हो सकती है, जबकि गेहूं की फसल है वो 120 और 140 डेज लेते हैं। तो जहां 2 फसल हम ले रहे थे, जहां 1 फसल ले रहे थे, वहां 3 फसल तक इसकी ली जा सकती हैं। इससे कि जो इंडियन फार्मर्स हैं और वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो इससे एम्पावर हो सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये घोषित हो चुका है, और हमारा जो प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी एम है, वो ये है कि इसके बारे में हम अवेयरनेस बढ़ाएं। साथ ही साथ इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको अमंग द पीपल जाके बताएं। इंडिया के बारे में जैसा कि लिखा है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और सेकंड लार्जेस्ट जो है ना एक्सपोर्टर हैं। हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी है कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका एक मैसेज ये भी जाता है, इसका एक मतलब ये भी होता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मिलेट्स का इस्तेमाल, उपभोग हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसको बहुत जल्दी से हम अगर थोड़ा सा प्रयास हो, अवेयरनेस हो, तो और इंक्रीज कर सकते हैं। हमें ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते रहें। हमें हमारे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में हमें सोचना है और उसको इंटैक्ट रखना है। डिक्लाइन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं, कुछ लोगों की रुचि नहीं, कुछ लोगों ने ये सोचा एक ज़माने में ये गरीबों का भोजन है, बाजरा कौन खाएगा, ज्वार कौन खाएगा, मक्की कौन खाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती। तो मुझे बचपन याद आ रहा है सर, जब पिताजी मेरे लिए कॉटन की शर्ट लेके आए थे। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, तो हम पिताजी को कहते थे कि पिताजी आप टेरिकोट टेरेलिन क्यों नहीं लाए, उसका ज़माना था। तो कहते बेटा ये ठीक है, आज टेरिकोट और टेरेलिन तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, मगर कॉटन मेरी पहुंच से बाहर है या बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो सकती है। तो यही कंडीशन इसके साथ है। अब हम वापस आ रहे हैं, और इसका एक नुकसान भी होगा आने वाले कल में कि हमारी थाली में तो मिलेट आ जाएगा, मगर जिनकी थाली में पहले से था वो शायद हम छीन लें। तो ये सारी बातें हैं जिनको हमें देखना है कि क्या क्या कारण रहे जिसके वजह से मिलेट जो है हमारा डिक्लाइन कर गया। लोगों के बीच में कंसोलिडेटेड फार्मिंग की कमी रही। छोटे छोटे किसान हैं मिलेट उगाने वाले, उत्तराखंड में मैं देखता हूँ एक एक नाली है उनके पास फार्मिंग करते हैं। अगर उनको कंसोलिडेट कर लिया जाए और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी स्टेट्स की अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हम ठीक कर लेंगे, और ये कारण रहे कि हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं रही। दूसरा, इसके साथ साथ अवेयरनेस को बढ़ावा देना है जो कि नहीं थी, ये एक कारण रहा, और हेल्थ और न्यूट्रिशनल एडवांटेज के बारे में लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वाई आर मिलेट गेनिंग अटेंशन नाउ अ डेज, ऐसे क्या कारण है कि अब हम वापस दौड़ रहे हैं मिलेट्स की तरफ सभी लोग। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसके कुछ प्रयास हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी को अन्न मिले। तो सभी को अन्न ये मिलेगा कि जो करंट जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसको इन्हांस किया जाए किसी न किसी तरह, और इन्हांस हमें समेकित रूप से करना होगा, हर तरह से करना होगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा हमारे फार्मर्स को। जो उगा रहे हैं, जो ये उगा सकते हैं, मिलेट्स उगा सकते हैं, उनको भी बढ़ावा देना है। तो इस तरह से अगर वो इंक्रीज होगी, हमारी कल्टीवेट होगा अगर मिलेट, तो इसका फायदा पूरे कंट्री को मिलेगा। दूसरा,
मिलेट एक ऐसा है कि जिसमें पानी नहीं भी मिला, कम भी मिला, तो भी मिलेट तो तैयार होगा। तो पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में वर्षा का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं होती है कभी नहीं होती है, किसी जगह ज़्यादा होती है, तो उन सारी कंडीशंस में मिलेट्स उगता है। टाइम कम लगता है पकने में, फर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। काऊ डंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से केमिकल्स की नीड नहीं होती। दूसरा, जो स्टेपल फूड का इशू है और जो क्लाइमेट चेंजेस के इशू हैं, उनको भी रिजॉल्व करना है। फाइंड अ डाइटरी रेमेडी टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर एक ओबीज है, ओबेसिटी का शिकार है, कोई डायबिटीज़ का शिकार है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई स्ट्रेस में जी रहा है। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है, टू एम्पावर मिलेट फार्मर्स को हमें एम्पावर करना है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। ये भी एक कारण है कि अब इसके बारे में चर्चा हो रही है। आयुर्वेद में धान्य वर्ग में इसका उल्लेख आता है, ग्रुप ऑफ ग्रेन्स इसको कह सकते हैं। क्षुद्र धान्य, छोटे छोटे सीडेड प्लांट हैं, इसमें जो क्षुद्र धान्य इसको कहा गया है, और कुधान्य भी इसको कहते हैं, इन्फीरियर अमंग ग्रेन्स। और तृणधान्य जो ग्रास डिराइव्ड ग्रेन्स हैं, उसके कैटेगरी में इसको रखा गया है। संहिता काल में इसके थेरेपेटिक डाइट के यूजेस देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी में गवेदुक का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया है। इसके अलावा हमारी जितनी भी होलसम डाइट प्रेपरेशंस हैं, उनमें पथ्य कल्पना के रूप में हम इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये दोनों के लिए, डिजीज पेशेंट्स के लिए भी और हेल्दी पेशेंट के लिए भी। रस पंचक जैसा कि आयुर्वेद में है, तो मोस्टली कषाय मधुर या कटु मधुर रस वाले ये अन्न हैं। विपाक कटु है, कटु तिक्त कषायणाम विपाक है, प्राय सो कटु। गुण लघु और रुक्ष है, और जो कर्म है, लेखन है, क्लेद शोषण है, और विबंध बद्ध मलकर है, यानी विबंध कर है। त्रिदोषों पे अगर इफेक्ट देखें तो कफ पित्तहर है, बात का प्रकोपक है, और रक्त सामक है। टाइप्स ऑफ मिलेट्स मेजर और माइनर में दो हैं कॉमनली, जैसे पर्ल मिलेट है, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी, प्रोसो मिलेट, चाइना, फिंगर मिलेट, मंडवा, रागी, फिंगर, नर्तकी, कई नाम है इसके। और ये उत्तराखंड की बहुत ही पॉपुलर मिलेट है। इसी तरह से बर्नियार्ड मिलेट, उत्तराखंड में इसको जंगोरा कहते हैं, इसकी खीर बनाई जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कोदो मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, समा, गिनी मिलेट्स और ब्राउन टॉप मिलेट्स। तो इनके जो कॉमन नेम हैं वो भी लिखे हैं, जैसे कि यबनाल बोलते हैं, सोरगम वगैरह है, ज्वार है, बाजरा है, मंडुआ है, कंगनी है, सांवा है, चैना है, कुटकी, कोदो। तो ये सभी मिलेट्स का इस्तेमाल अब होने लगा है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ज्वार, सोरगम आयुर्वेद के हिसाब से रुचि पैदा करने वाला है, तृषा निग्रहण है, थर्स्ट को कम करता है, क्लेदग्न है, आप्य अंश को सोखता है। बाजरा ड्रॉट टॉलरेंस फसल इसको माना जाता है। इसमें क्रोमियम और आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और एक अच्छे प्रोपोर्शन में प्रोटीन इसमें रहता है, और हाईएस्ट B3 कंटेंट इसमें रहते हैं, जो कि साथ ही साथ नॉर्मोग्लाइसीमिया करते हैं। मुझे सर की एक बात याद आती है, BS शर्मा सर की, मैं यहाँ पे कोट जरूर करना चाहूँगा। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, PG स्कॉलर था, तो सर के शाम को इवनिंग में हम लोग जाया करते थे कभी कभी। तो एक पुअर पेशेंट आया जो कि माल नरिश्ड बेबी था उसका। सर ने उससे फीस भी नहीं ली, बहुतों से नहीं लेते थे, मगर उसके साथ साथ सर ने कहा, ऐसा है कुछ नहीं, तू इसको राबड़ी खिला। मैंने, सर कुछ लिख देते हैं। नहीं, राबड़ी खिला। तो सर ने बताया कि इजी डाइजेस्टेबल है, अगर 4 बार खा लेगा तो इसको कैलोरी प्रॉपर मिल जाएंगी और इसका हल निकल जाएगा। सर, इसको मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में कोट करता हूँ आज तक, और मुझे याद है आपके वर्ड्स। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है सर। रागी, फिंगर मिलेट, नर्तकी। फिंगर मिलेट, फिंगर लाइक अपीयरेंस है इसकी। कर्म तर्पण है, बल्य है, रक्त दोषर है, रसायन है, वृक्ष है। और मंडुआ को हम इसीलिए कुपोषण में इस्तेमाल
करते हैं। उत्तराखंड में बाल विकास विभाग में मड़ुआ के लड्डू बना के आज से 5 साल पहले से वो विभाग कार्य कर रहा है इस पर। और रक्त पित्त त्वक दौर्बल स्थौल्य प्रमेय ये सब में इसका कार्य है। मैग्नीज लेवल अच्छा है एज कंपेयर टू राइस देखेंगे आप तो 5.5 mg पर 100 ग्राम है और राइस में 0.51 है। कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है ये मिलेट्स के बीच में 300 to 350 mg पर 100 ग्राम इसमें कैल्शियम है, राइस में जबकि 10 ही है। तो बाउंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम है। कंगनी फॉक्सटेल मिलेट संग्राही है, अतिसार में इंडिकेटेड है, फाइबर अच्छा है, कॉपर आयरन अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और इसकी नर्सिंग ग्रेल यानी कि खिचड़ी के रूप में प्रेग्नेंट और नर्सिंग लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा है। शामाक अतिसार, गृहिणी, संतर्पण जन्य व्याधि जितनी भी है, ओबेसिटी वगैरह, कफ पित्त प्रधान रोग, त्वक विकार, आम बात, जीआरए बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं हम ऐसा स्कोप बनाएं कि उसकी डाइट में बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। गाबा है, कामिंग एजेंट है ना, मैसेज को इनहिबिट करता है ब्रेन के लिए। बीटा ग्लूकॉन और ये भी इम्यूनिटी इनहेंसर है और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एक अच्छा बर्नयार्ड मिलेट का मिनरल्स हैं इसमें। चीना प्रोसो मिलेट गुरु है आयुर्वेद के हिसाब से, पचने में बहुत भारी है, इसीलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका। अगर एक बार खा लें तो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता जाएगा। ये एक अच्छा एक विकल्प डाइट का हो सकता है। इसको प्रैक्टिस में रखें, भक्त संधान कर, और प्रोटीन्स भी अच्छी क्वांटिटी में है। सामा मधुर रस, कषाय, लघु, वीर शीत, लेखन कर्म करने वाला है। आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है, 9.3 mg पर 100 ग्राम, राइस में 0.7 ही है। हाई जिंक कंटेंट 3.7 मिलीग्राम और 30% डाइटरी फाइबर है। तो एक अच्छा ये विकल्प हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए भी, और इवन जो है ना कॉन्स्टिपेटेड पर्सन्स के लिए भी। कोदो मिलेट रस, मधुर, कषाय, लघु, रुक्ष, गुण, वीर, शीत, विपाक, कटु, परमग्राही है, बद्ध बिटकता करता है, स्थौल्य, प्रमेय, मेदो रोग, और इनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लेश शोषण है, लेखन है, बेसहर है और व्रण के लिए पथ्य है। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 60% ऑफ कैलोरीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट इससे मिलेट से मिल सकता है, जो कि जितनी रिक्वायर्ड है किसी भी दूसरे अनाज से कम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। इसके साथ साथ 16% फाइबर है और 9% प्रोटीन है और इसके साथ 3% मिनरल्स हैं। तो एक अच्छी डाइट के लिए, एक नर्सिंग डाइट के लिए ये कॉम्बिनेशन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें डिटेल लिखी हुई है, आप राइस और व्हीट से कंपेयर करके देखेंगे तो आप मिलेट्स को इससे ऊपर ही पाएंगे, तभी इसको एज सुपर फूड नोमेनक्लेचर दिया जा रहा है आजकल। हाउ टू ऐड मिलेट्स इन डाइट। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है पादांशिक क्रम का, चरक संहिता में आता है, क्रमेण उपचिता दोषा क्रमेण अपचिता गुणा संतो अयांति अपुनर्भावम अप्रकम्या भवंती ही। अगर हम धीरे धीरे एक ऑर्डर में एक परसेंटेज बेसिस पे अगर मिलेट्स को हम इसमें अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो निश्चित रूप से ये बेनिफिशियल हो सकती है, और यही क्रम अपनाना चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंडली हम टोटल डे टू डे की प्रैक्टिस में सुबह भी ब्रेकफास्ट मिलेट का हो रहा है, लंच भी मिलेट और डिनर भी मिलेट, वो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। और मिलेट ग्रेन जो है, मिलेट है, इसको मल्टी ग्रेन फूड में भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स, डायबिटीज में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से मिलेट्स एक बेहतर विकल्प है। तो इसका हमें जहाँ पे भी अवसर मिले है ना डायबिटिक्स की डाइट में,
इसको हमें डालना चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे फाइबर अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है, कई जगह कॉन्स्टिपेशन भी करते हैं मिलेट्स। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसका विकल्प हमारे पास संस्कार हमेशा रहता है। सभी आयुर्वेद से हैं, जानते हैं, उसका प्रयोग करें, अनुपान का प्रयोग करें, साथ में और चीज़ें ऐड करें। फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, प्रोबायोटिक्स इसमें है और ग्लूटेन फ्री है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ग्लूटेन एंटेरोपैथी बढ़ रही है, सिलिक डिजीज के केसेस आ रहे हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उनमें मिलेट्स हमारे लिए एक अच्छा भोजन है। टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके वेंजिंग कैपेसिटी इसकी है, तो क्यों ना मिलेट को स्थान दिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हुए हैं। रूक्ष है इसलिए बात कर भी है, रूक्ष होने की वजह से तो बात प्रधान व्याधियों में या तो ना दें या संस्कार करके दें। संधिगत बात, सूल, कार्स, शोष, इसमें दीपन पाचन द्रव्य, घृत का प्रयोग या अन्य कोई बाथर या विबंधनाशक जो भी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं वो उसमें मिक्स करके दें। दुर्जर होने के वजह से पचने में बहुत समय लगता है, तो अजीर्ण के केसेस हैं, मंदाग्नि के केसेस हैं, विबंध के केसेस हैं, उनमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है जब तक कि आप इसके साथ कुछ अलग से मिक्स नहीं करेंगे। दीपन पाचन बात सामक प्रक्षेप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मात्रा को कम करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक अच्छा जो है ना भोजन तैयार कराया जा सकता है हमारे पेशेंट्स के लिए भी और हेल्दी पर्सन्स के लिए भी। मिलेट्स रेसिपीज की बात करते हैं, बहुत जल्दी से आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की ये रेसिपी है, बाड़ी बहुत फेमस है। बाड़ी थेचवानी का बड़ा नाम है, मडुआ की रोटी और झंगोरा की खीर का बड़ा नाम है, तो बाड़ी उनमें से एक है। बाड़ी कोई विशेष नहीं है, राजस्थान में जो हम बाजरे का जो दलिया बनाते हैं उससे उस जैसी है ये बाड़ी, और मडुआ से बनती है। झंगोरा की खीर बहुत डेलिशियस है। चॉकलेट ज्वार स्मूदी बना सकते हैं, क्योंकि विकल्प जरूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि वो रूटीन भोजन नहीं करना चाहते, वो कुछ रेस्टोरेंट में या कुछ बाहर की चीज़ें वो पसंद करते हैं। तो अगर जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तब तक इसको उनके लाइफ में हम इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, उनका पार्ट नहीं बना सकते। तो उस पर भी ध्यान रखा गया है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। स्मूदी के रूप में ज्वार की स्मूदी दे सकते हैं। पर्ल मिलेट पॉरिस, पर्ल मिलेट बाजरे का दलिया है, एक अच्छा विकल्प है। इजी डाइजेस्टेबल सर का अभी मैंने एग्जाम्पल कोट भी किया था, राबड़ी का। बिरयानी, ओ सोरगम डोसा, अच्छी बात है। सोरगम खिचड़ी सामने है। पर्ल मिलेट हलवा राजस्थान में तो खाया जाता है और प्रदेशों का मुझे मालूम नहीं, बहुत टेस्टी होता है। फिंगर मिलेट लड्डू, मंडुआ के लड्डू। फिंगर मिलेट केक, फॉक्सटेल मिलेट कटलेट, कटलेट भी खाती है ये हमारे जनरेशन है, ये कटलेट वगैरह ये सारा पसंद करते हैं। खीर, कोदो मिलेट पायसम। एक आप देख रहे हैं एक साइड में मिलेट है, दूसरी साइड में स्टेपल फूड है, हमने टर्न तो ले लिया है। और इस अवसर पर मुझे एक पोएम की लाइन याद आती है, द रोड नॉट टेकन। युवा पीढ़ी ने तो निश्चित रूप से पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। हालांकि उसका विषय अलग है कि आपको हर आगे जाके दो राह मिलेगा और आपको चूज करना क्या बेहतर है। ठीक इसी तरह की कंडीशन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, द रोड नॉट टेकन। नहीं लिया था हमने, वाकई सही बात है, सही रास्ता हमने नहीं चुना, मगर अब चुन रहे हैं या चुन लेंगे। तो एक बेहतर विकल्प मिलेट्स का, सही रास्ते पे आ जाएं तो हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर्स की जेबें कम गर्म होंगी, वो एक अलग बात है, मगर डॉक्टर्स भी स्वस्थ होंगे, ये एक अच्छी बात है। सुपीरियरिटी ऑफ मिलेट ओवर स्टेपल फूड, आज के स्टेपल फूड की बात कर रहे हैं। ग्लूटेन फ्री है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका नाम लो आपको मिलेट्स में मिल जाएंगे। श्री अन्न स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है। वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला जी ने इनको श्री अन्न नाम दिया था, और उसके बाद
जो इंडस वैली में इसका जिक्र है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि श्री अन्न कंसिडर्ड बेस्ट फॉर डायबिटीज एंड हार्ट पेशेंट्स फॉर दीज रीजन श्री अन्न इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर फूड। G20 समिट दिल्ली में हुई थी, दिल्ली से लोग हैं, वो लोग इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, और वहाँ पे भी इसका जो गाला डिनर हुआ था उसको प्रयोग किया गया। लिटिल मिलेट क्रिस्प बनाए गए, पत्रम बनाया गया, बर्नर्ड मिलेट का पुडिंग सर्व किया गया था। इसके अलावा आयुष इनिशिएटिव्स कुछ हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। मिलेट कैंटीन, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में ये संचालित है या नहीं पता नहीं, या बंद हो गई हो, चल रही है, ओके वेरी गुड सर। हेल्थ एंड मिलेट एक्सपो ITRA जामनगर में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप, ये भी जो है ना इन्हीं का है, दिल्ली वालों का, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेटेड ये इनका अभियान है। आयुष स्टार्टअप फॉर मिलेट IPGT एंड RA जामनगर में आयुर्वेद से पोषण थीम पर इसको चलाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में उत्तराखंड मिलेट मिशन के नाम से कैबिनेट ने इसको 16 फरवरी 2023 को पास किया है। और मंडुआ और झंगोरा जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स है हमारे उत्तराखंड के, उनको इसमें शामिल किया गया है। और ख़ास बात ये है कि गरीबों तक कैसे पहुँचे, ये भी हमारे लिए एक ज़रूरी बात है। तो अंत्योदय के अंडर जितने भी लोग आते हैं अंत्योदय स्कीम में, उनको फ्री दिया जा रहा है। अंत्योदय स्कीम में जितने भी लोग आते हैं उनको लगभग फ्री दिया जा रहा है राशन कार्ड पर, 1 रुपीज़ पर kg ऑलमोस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और झंगोरा मिड डे मील प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में अभी इसको शुरू किया है। इसके अलावा पूरे स्टेट में इसको उसके बाद शुरू किया जाएगा जैसे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि फार्मर्स को पहले कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, इनके लिए मंडुआ के लिए सिर्फ उत्तराखंड के लोग खाते थे और बहुत ही सस्ती दरों पर मिल जाता था। अब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है 35 रुपये 78 पैसे पर kg। कुछ दिन पहले मैं इसका मिलेट का आटा लेके आया था मंडुआ का, 60 रुपीज़ पर kg में हरिद्वार में अवेलेबल हुआ। महंगा नहीं है, गेहूं से सस्ता पड़ेगा, बाजरा से भी सस्ता पड़ेगा। कारण ये है कि ये आपको पूरा भोजन नहीं करना है, एक चपाती भी शामिल कर लेंगे तो ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स टाइम टू रिलीज द सुपर फूड मिलेट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं सम्मानित मंच की अनुमति से बीच में एक छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा जी, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले उनको इंट्रोडक्शन बताया था कि वो हमारे विशेषाधिकारी आयुर्वेद राजस्थान सरकार में हैं। तो आज कुछ गतिविधियां वहां पर इस प्रकार की चल रही है, उनको जाना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल जी के सम्मान के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूं हमारे PGIA के डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी को, और उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य दीक्षित सर को। प्लीज़ आप आएँ और हमारे गिरधर गोपाल जी का स्वागत और सत्कार के साथ सम्मान कर उनको मूवमेंट और सर्टिफिकेट भेंट करें। प्लीज़ सर। सेंटर में खड़े हो जाओ, इधर से तीसरा। थैंक यू सर। अब हमारे सेकंड कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर VS शर्मा सर।
गुरुजनों पर पहला अधिकार शिष्य का होता है। तो मैं हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शंभू दयाल जी को आमंत्रित करता हूं कि सर के बारे में कृपया थोड़ा सा बताएं। प्रोफेसर शंभू दयाल शर्मा जी। नमामि धन्वंतरिम आदि देवम सुरासुरै वंदित पाद पद्मम लोके जरा रुग भयभृत्युनाशम धातारम ईशम विविधौषधिनाम। सभी को सादर प्रणाम। सम्मानित मंचासीन आदरणीय गुरुजी वेद प्रकाश जी और मेरे समस्त शिक्षकों को सादर प्रणाम। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का पल है जिनका परिचय देने के लिए मुझे यहाँ आहूत किया गया है। उन्हीं के द्वारा मेरा परिचय इस लोक में या आपके सम्मुख खड़ा होने लायक हुआ है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर BS शर्मा जी का जन्म 1956 में राजस्थान प्रांत में हुआ है। सर ने MBBS MD और नियोनेटोलॉजिस्ट के रूप में विशेष कार्य किया है। सर का परिचय देने के लिए जो टाइम पीरियड यहाँ पर लिमिटेशन रखी है, कोई परिचय इनका मतलब इनके जो शिष्य ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं। सर मेंबर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं। बाल रोग में हर क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ आदरणीय सर ने रेस्पिरेटरी, एलर्जी व इम्यूनोलॉजी पर विशेष कार्य किया है और छात्रों का इसका ज्ञान प्रदत्त करवाया है। सर का जो टोटल एक्सपीरियंस है 34 इयर्स का है। उसमें सर ने UG PG DM पल्मोनोलॉजी के छात्रों को विशेष ज्ञान इसमें दिया। अभी भी सर JK लॉन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से प्रोफेसर एंड हेड के पद से रिटायर होने के पश्चात निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में डायरेक्टर के पद पर इस समय डायरेक्टर पद का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही IAP में जो अस्थमा मैनेजमेंट का जो काम हुआ वो सर के कर कमलों के द्वारा ही संपादित हुआ है। साथ ही सर को अनगिनत राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें से FIAP फेलो अवार्ड 2021, स्वर्गीय श्री डॉक्टर SR फेलोशिप इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन ऑफ IAP अवार्ड, WHO फेलो अवार्ड वियतनाम। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री टोक्यो जापान से सर सम्मानित अवार्डेड हैं। अपने विद्यार्थियों के लिए सर रोल मॉडल रहे हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदीय जो हमारी आयुर्वेद पद्धति के PG अध्येता NIA जयपुर से जो भी MD कर रहे थे उनके सर को सुपरवाइजर के रूप में मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न पीडियाट्रिक्स का ज्ञान दिया है और उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे भी सर को सुपरवाइजर रहे हैं और ये मेरे लिए एक मतलब सम्मान का पल है और ऐसे गुरु को मैं सादर नमन करता हूँ। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जिनके द्वारा हमको परिचय दिया गया है उनका सादर नमन। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, सर अपना उद्बोधन देके हमें कृतार्थ करें। इसी बीच मैं आप सभी लोगों को सूचित करता हूं कि पैरेलल सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी उस पैरेलल सेशन से संबंधित यहाँ पर डेलीगेट्स या डिग्निटरीज बैठी हुई हैं, कृपया वो अपने कॉलेज के सभागार में पहुँचें और अपने स्थान पर जो भी जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं कृपया उनका निर्वहन करें प्लीज़। थैंक यू सर। Honorable Professor Ved Prakash Sharma, the chairperson of the session, Dr. Shishir,
co-chairperson of this session, my co-speakers, Dr. Garg, Dr. Venkat Joshi, and Dr. Kaushalya, dignitaries sitting off the dais, respected teachers, my dear friends, dear delegates from all over the world, a warm welcome, Sagar Abhinandan, to this international conference, KumarCon 2023. Friends, at the beginning, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the organizing team of this international conference, led by Dr. Prem Prakash Vyas, who has given me this opportunity to share this dais with these dignitaries and to interact with the august audience. I feel really being honored by this. My heartiest congratulations to the team who has organized this conference for such a nice and beautiful organization of the conference of this standard. The organizing committee, especially the scientific committee, also deserve a big compliment for rightly making the hymn of the conference recent advances in child health by Ayurveda. Friends, it's extremely gratifying to see some of my old friends in the audience and some of my brilliant students. It's very satisfying to see them performing extremely well in their different stages of their career. Thank you so much for making proud of you. Friends, throughout the human history, the pursuit of health has driven the development of distinct medical care systems within various communities. It's a natural phenomenon. Ayurveda, the ancient Indian healthcare system, boasts a rich history spanning several thousand years, suggesting an evidence-based foundation. However, unfortunately, in the contemporary landscape, the traditional and modern medical systems exist in competition, often as separate and mutually exclusive entities. And friends, for this reason only, the next 15 to 20 minutes, I am going to emphasize that holistic approach to child health by integrating both the medicine system, Ayurveda and modern medicine, is the need of the hour. Pediatrics can be defined as the branch of medical science that deals with the care of the children from conception to adolescence, both in health and illness. And this is a holistic kind of branch which deals with preventive, promotive, curative, and rehabilitative care of children. Why the pediatrics is so important? It is important because children under 15 makes a substantial proportion of the total population, so they demand a big share in the healthcare system. Due to their special needs, children are more prone for various health issues. Many of the health problems, majority of the health problems and majority of the deaths in children are largely preventable by an appropriate care. Children require special attention because of their special needs and care to overcome these health challenges and survive. The health and well-being of children today contribute significantly to the future wealth. They are the future wealth of the nation and the world. As you know better than me, that the first citation on the quality of breast milk and child hygiene dates back to 2025 BC in the Indian Susut Samhita. The initial manuscript addressing the management of childhood disease is found in the Kashyap Samhita. This is probably making the first written record of pediatrics all over the globe.
Sushruta, one often referred to as the Indian Hippocrates, provided insights into Ayurvedic medicines for use in pediatric disease in his work in Sushruta Samhita. Acharya Kashyap referred as one of the earlier pioneers in the pediatrics in the Ayurveda era. Hippocrates, a Greek philosopher also known as the father of modern medicine, has also made significant contribution in the knowledge of disease in children. But for modern medicine, Abraham Jacobi is considered as father of modern pediatrics. He was a German physician. Pediatrics as a subspecialty came into being in 1860 by Dr. Abraham Jacobi. He established the first child clinic in New York. In 1888 AD, the first department of pediatrics was established in the Harvard Medical School. Then why this pediatrics has gained so much growth in the past? Because of the advancements in the medical science that has played a key role in the growth of modern pediatrics. The basic science development has contributed significantly in the understanding of and progress in the pediatric disease. The increased interest in the public health has fueled the growth of pediatrics as a subspecialty. Enhanced social laws, which are more child-friendly, have provided a good framework for better child health and well-being. The improved health facilities all over the world have supported the development and expansion of the pediatric services. There is a growing emphasis on preventing disease and promoting overall well-being of the child rather than just treating the disease, and probably there we need an integration. The establishment of dedicated pediatric hospitals has been a significant factor in the growth of pediatrics. I think in Jodhpur you can see 5 or 10 pediatric hospitals coming up. In Jaipur there are more than 20, exclusively pediatric hospitals, and that is the reason the pediatrics is gaining more and more importance. The recognition of social needs of children has driven the health promotion and disease prevention efforts all over the country. A shifting societal attitude towards younger members of the society, means the children population, has influenced the expansion and importance of the pediatric care. But friends, there was a biomedical model which was derived in the past by the Louis Pasteur's germ theory of disease, which has dominated the whole of the 20th century, especially in the beginning. This postulates that all disease is a product of a biological defect, often initiated by a biological pathogen. The model is reductionist, seeking to explain all the disease in the biological terms. They were not ready to accept the other theories. This biomedical model was usually successful in the beginning, because at the beginning of 20th century, the leading cause of death were infectious diseases like tuberculosis, pneumonia, influenza, and diarrhea. The model's germ theory of disease essentially eliminated because of the advent of penicillin, anti-tubercular drugs, and all those medicines. We were able to eliminate the infectious disease as the primary cause of death. This was in the 20th century. But soon we realized that by the end of 20th century, the leading cause of death are changing. They are now the chronic diseases like heart disease, cancer, and stroke. Although the life expectancy has increased significantly from 47 years in 1900 to 77 years 2000, but the disease burden of these chronic diseases is extremely, extremely hilarious. You can see the state of affairs in the US. The Americans continue to die primarily from chronic disease, and the biomedical model has totally failed to successfully address this modern healthcare challenge, because there is no advancement in the future innovation of antibiotics. There is emergence of tremendous bacterial resistance to these antibiotics, so the germ theory is not going to work anymore. Almost 1 in 2 US adults has a chronic disease, and the treating chronic illness accounts for 75% of their healthcare cost. Further, in US, the healthcare costs continue to escalate with very little positive impact on the survival or on the health of the people. The United States leads the world in healthcare expenses, exorbitantly, extremely costly, but the US life expectancy is just the same as Cuba. So the model is not effective. We need to seriously think of some other theory. So the challenges ahead, especially I am coming to Indian population. In modern times, India faces a double disease burden. We are not still out of infectious disease, so the concrete measures are needed to address the rising epidemic of non-communicable disease, but at the same time, we have also to keep the momentum towards progress on the preventable infectious disease, maternal and childhood mortality.
The economic cost for the healthcare system is also increasing, as the non-communicable disease contribute 40% of the inpatient admissions and 35% of outdoor cases. At the individual level, the loss of productive life years due to the non-communicable disease in India has been estimated to be one of the highest in the world. That is the loss of manpower. According to WHO, an important way to control the NCDs is through reducing the associated behavioral risk factors like smoking, alcohol consumption, increased physical activity, and adopting healthy lifestyle. These behavioral risk factors are closely linked with other social determinants like unequitable access to the healthcare system, poverty, gender discrimination, dietary factors, and education. The lack of physical exercise and lower intake of fruits and vegetables, coupled with unhealthy food habits, which Dr. Giraj was mentioning in his lecture, is rapidly progressing. That is where the Ayurveda have to play an extremely crucial role. So this is where the integration of Ayurveda and modern medicine is the most cost-effective strategy. You have to put less amount of input in terms of manpower or money, but the impact is huge. The basic difference between the two medicinal approaches is that Ayurveda and modern medicine have different approaches to the healthcare because of different thoughts to begin with. Ayurveda emphasizes the importance of balance and harmony in the body, mind, and spirit, and preventing illnesses rather than treating, while modern medicine focuses on treating the specific symptoms or the disease. Ayurveda uses the natural remedies and the lifestyle changes to promote health, while modern medicine mainly relies on the synthetic drugs and the surgery. However, it is not an either-or situation. They are complementary to each other. You can use both kind of medicines or both kind of pathies for betterment of your patients in terms of curative, in terms of preventive, and dealing the chronic illnesses especially. And hence, there is a strong need for integration of both the system of medication. But there is always a conflict. There is always a battle between allopathic and Ayurvedic medicine. The entire approach to sickness should be a selfless service to help patients get into a healthy life. The aim of both the pathies, every doctor in whichever pathy he belongs, he believes the ultimate motto is the selfless service to help the patient gets into a healthy life. It is not surprising to see that after an Ayurvedic treatment, the patient will find improvement in their mental, physical, and psychological aspects by successfully restoring the accurate balance of the human body. Every day you are watching that. However, the role of modern medicine should not be underestimated in acute and infectious disease. Although modern medicine is necessary and life-saving at times, but the remedies might be unsatisfying to the body and senses, Ayurveda can be a complementary therapy in these situations by assisting and attaining a total equilibrium of the mind, body, and spirit. Is Ayurveda good for children? Yes. Ayurveda is fundamentally a preventive approach to well-being. Ayurveda can correct the imbalances that may be cropping up in our developing kids. Hence, it has the potential to set our children on a lifelong path towards optimal health and well-being. Let me illustrate this concept with few examples. The modern medicine traditionally has focused on discovering treatment in response to the diseases. By focusing on biology first and identifying the root causes of disease, healthcare professionals can better treat the patients and mitigate the chronic disease, which is the concept of Ayurveda. Adopting this perspective of change will also reduce the healthcare cost via better outcomes sooner, and in many cases, decrease use of unnecessary medical specialist visits, unnecessary tests, and unnecessary use of medications. This shift in perspective is well illustrated. For example, we examine the micronutrient deficiencies, which are more common than we suspect. These micronutrient deficiencies present in various vague symptoms. We never suspect them unless we do a test for that. If micronutrients are not routinely tested, the specific driver of many chronic illnesses can often be overlooked. We just miss them, and we miss a potential and sometimes a very relevant clinical information if we don't look into the nutritional deficiency as the cause of the symptoms presenting the patient. Here I will use vitamin C deficiency as a model, but other micronutrient deficiencies like vitamin B, vitamin D, and other minerals similarly could illustrate the same problem.
As we know that the symptoms of vitamin C deficiency includes fatigue, depression, chronic pain, dental issues, and poor wound healing. A patient comes with these symptoms, many of us not think of vitamin C. We will unnecessarily going to investigate this child for many more diseases by subjecting for unnecessary tests, unnecessary medications. Similarly, it is well known that older people and those with psychiatric illnesses might be vitamin B deficient, and supplementing vitamin B may just improve them without any investigation, without any aggressive therapy. Those with indoor lifestyles, especially all the doctors, are also prone for vitamin D deficiency. Yet, the vitamin deficiencies might be overlooked. We don't test them routinely, while the patient is given another medication for the same problem, or he is asking appointment from one or the other doctor, being subjected for other investigations. We now know that better nutrition over the lifespan, right from the fetal period to the childhood and adulthood, if we have a better nutrition, we can prevent or mitigate many illnesses such as Alzheimer's disease, many cardiovascular disease, mood disorders, diabetes, and many more. So from here, as if we move forward, let us remember that healthy food is indeed a medicine, and that is the core concept of Ayurveda. I can further illustrate with our own study. We did a study in 2017, which was published in Indian Journal of Pediatrics 2021. Here we studied the effect of yoga therapy as an adjuvant therapy in management of children suffering from asthma in almost 150 children. The conventional treatment of asthma was given, but there was a group where only the conventional treatment was given. There was a group where the conventional treatment was supplemented, complemented by yoga therapy. And then we find out that yoga appears to have significant positive effect on control of asthma measured by the pulmonary function test and the quality of life. So there is a clear-cut evidence. The major hurdle in integrating the Ayurveda with modern medicine, people say that Ayurveda lack evidence. No, it doesn't lack evidence. There is only the need to find that evidence, and this study beautifully illustrates that. So how to integrate? The integration of modern medicine and Ayurveda in pediatric disease is a complex and evolving area of healthcare, which signifies a promising avenue for delivering more holistic and a patient-centered healthcare. In embracing Ayurveda's holistic principles, which consider not only the physical symptoms, but also the mental and spiritual aspects, the healthcare providers, the doctors from both the pathies can gain a more comprehensive understanding of pediatric disease. The individualized approach, which is inherent in Ayurveda, tailoring the treatments based on child's unique constitution or prakriti, can be seamlessly integrated with the precision of modern diagnostic tools, allowing for more personalized and effective treatment plans for both the physicians. Ayurveda's emphasis on preventive medicine aligns well with the growing recognition of importance of lifestyle modifications, dietary considerations, and herbal supplementation in maintaining the overall health of the children. Now, how to do that? The incorporation of herbal supplements validated through rigorous scientific research can complement conventional treatments, offering a broader spectrum of therapeutic options. In addition to the modern medicine, we can supplement these things as a holistic approach. Mind-body practices such as yoga and meditation, which are integral to Ayurvedic principles, present valuable tools for managing the stress and promoting mental well-being in pediatric patients also. Collaboration and effective communication between Ayurvedic practitioners and modern healthcare professionals or doctors are of paramount importance, ensuring a harmonious exchange of knowledge and expertise between these two pathies. Educational initiatives that foster an interdisciplinary understanding among healthcare professionals from both the systems are crucial for successful integration. Then there has to be some regulatory obligations. To facilitate this integration, a robust regulatory framework must be established, ensuring the safety, the quality, and the standardization of Ayurvedic products and practices. That is the need of the hour. In the pursuit of patient-centered care, informed decision-making involving the parents, guardians is central, ensuring that the integrated treatment plan is not only effective, but also culturally sensitive and culturally acceptable and should be well received by the family. So from where to begin? The government plans to have a One Nation, One Health system policy by 2030, which would integrate all the modern and traditional system of medicine in practice, education, and research, fostering a two-way exchange.
The Ayurveda healthcare providers will be imparted modern medicine knowledge, and the modern medicine doctors would be provided the Ayurveda knowledge. Further, the National Medical Commission, which was previously known as MCI, has made it compulsory for every medical college to have a department of integrative medicine research to promote integration of modern medicine with homeopathy and Indian system of medicine such as Ayurveda. So to achieve these, we need to have certain tools, or we need to proceed with the following objectives: a unified healthcare system, one nation, one healthcare system, standardized curricular development for both the pathies, research collaborative initiatives done in both the pathies. Ayurvedic principles should be tested against the evidences with the modern medicine and the other way also. Then there should be a holistic patient care approach. The patient should be at the center of your discussion. Inclusive medical education, public awareness plans, and establishment of regulatory framework, so that the Jhola Chap doesn't come up. It has to be a stringent regulatory framework, the integration of traditional healers, and global collaboration in healthcare with the other countries. So friends, to conclude my talk, Ayurveda is an ancient Indian medical system that has gained popularity in the modern world also, because people have started realizing that without Ayurveda it is difficult to achieve holistic care. Ayurvedic practices offer a holistic approach in healthcare, which emphasizes the importance of balance and harmony in the body, mind and spirit. Ayurveda faces several challenges also in the modern world, including the lack of scientific validation, which I am stressing again and again. Please have collaborative research which generates evidence, which support your point, and opportunities in the modern world, including the lack of scientific validation, the cultural appropriation, and quality control and safety concerns. However, Ayurveda has the potential to complement modern medicine, provide natural alternative to conventional medicine, and create new opportunities for lifelong path towards optimal health and well-being. A paradigm shift to biology-centric approach in medicine is required. It holds the key to redefining treatments and effectively addressing the prevalent health issues of the country, especially the non-communicable disease. Keeping a striking balance between the strengths of modern medicine and Ayurveda. Both should be respected. The healthcare professionals can collaboratively, jointly shape a synergistic approach that maximizes therapeutic benefits while prioritizing the safety and well-being of the pediatric patient. This is extremely important. But friends, as a doctor, embracing this integrative approach requires a जामनगर से कंप्लीट किया है। मैडम अभी तक लगभग 8 अपने स्टार्टअप प्रारंभ कर चुकी हैं और विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपने पेपर प्रेजेंट कर चुकी हैं और लगभग 5 बुक्स में उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी तक इस एजुकेशन के फील्ड में पीजी के बाद भी उन्होंने अपने जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए सर्टिफिकेट इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्सेप्टेंस करके इसको भी कंप्लीट किया है। अवार्ड भी मैडम को करीब 9 अभी तक मिल चुके हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं, मैडम प्लीज़ अब अपना गेस्ट लेक्चर प्रस्तुत कर ऑडियंस का ज्ञानाभिवर्धन करें।
an ancient Sri Lankan painting aged 1,500 years ago. Here you can see the delicate way of holding the flower bud, representing the mudra representing the knowledge and wisdom. The flower is a very sensitive element of the nature, like a Saukumari Sishu or a baby in Homo sapiens sapien world. Ayubowan, Namaskar, good morning to all of you. I am Dr. Kaushalya Senani Bandar Kalawana from Faculty of Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo, Sri Lanka. Outline of my presentation. These are the 4 weighted words in my presentation. First, Sri Lanka. It is the longest written history in the world, started from 5th century BC to date and still being continued, the great chronicle Mahavansa. And there are unique geographical features of Sri Lanka. It has been identified as the lowest gravitational force location in the world, and Sri Lanka's proximity to the magnetic equator, the magnetic field is horizontal. And there is an energy installation due to the Sri Lanka experience sun fluctuating overhead twice a year. With these features, it contributes to Sri Lanka's uniqueness, attracting scientific interest. Next weighted word is Ayurveda, the life of science. I can describe it as an indigenous scientific approach to human health. It is a South Asian heritage and indigenous methods developing universal wisdom through nature's guidance. As far as Sri Lanka is concerned, according to the Ayurveda Act, Ayurveda includes the Ayurveda, Siddha, Unani, and Deshiya Chikitsa systems of medicine and surgery, and any other system of medicine indigenous to Asian countries and recognized as such by the governments of such representative countries. Pediatric practice. Pediatric phase is a very delicate phase of human life, as I said in my first slide. So we have to be more sensitive in pediatric care. We should embrace the proven historical practices regarding the pediatric care. Then we can modernize those practices with new technologies for safety and efficacy and further for global acceptance. Here you can see in my left side our current existing practice of pediatric care, and in my right side you can see the child grandmothers are carrying their granddaughters. I still believe that our grandmothers, in Sinhala we call Atamma, in your language Dadi or Nani, they are the best pediatrician. They can identify the simple, minute changes in our kids. They can identify minor ailment as described in Vedana Adhyaya in Kashyap Samhita. The next weighted word, research. Research is defined as the creation of new knowledge and or the use of existing knowledge. This could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. Research means exploring into ancestral wisdom. First, we have to understand ancestral knowledge, but we cannot understand the base only through the knowledge frame what we are practicing nowadays. But we have to
conduct some anthropological analysis to find out the reason behind their findings. For that, with anthropological analysis, then we can adopt the ancient wisdom for modern technology, and then we will be able to bring this knowledge into new developmental phases. Our great sages and ancestors, they communicated with nature very effectively through Shila, discipline, through Samadhi, focusing attention, and they were able to communicate with the nature, gain prajna or wisdom. But nowadays, we are dealing with knowledge, not the wisdom. This is current pediatric practice based on knowledge, and right side, our ancient practice based on the wisdom. Why I am saying like that? We identified through the genetical analysis and everything, chromosomal disorders, Down syndrome and everything. But in our great sages have described bija dosha, bija bhaga avayava, and everything as a root cause for sahaja roga through the wisdom they gain through the nature, not by the scientific research. Coming to my main context of my topic, the research and updates in pediatric practice through Ayurveda in Sri Lanka, I will discuss under 7 headings like institutes, education, human resources, research, healthcare, outreach program, and collaboration related to the Kaumara Bhutya or pediatric in Ayurveda. Institutes, we have one postgraduate institute of indigenous medicine, University of Colombo, and a faculty of indigenous medicine, University of Colombo, it's my faculty, and Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine, you can see the location also, and unit of Siddha Medicine, University of Jaffna, faculty of Siddha Medicine, Eastern University. For our clinical practice and clinical training, there is a big national Ayurveda teaching hospital in Colombo, and there we have established a professorial unit of Kaumara Bhutya, and also it has been accredited as a training unit for postgraduate studies, MD Ayurveda program. And there is for Siddha Medicine, Siddha Teaching Hospital in Jaffna, and Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Teaching Hospital, National Institute of Traditional Medicine, Navinna, and Bandaranaike Memorial Ayurveda Research Institute. Kaumara Bhutya education in Sri Lanka. I am happy to tell that Postgraduate Institute of Indigenous Medicine was established in 2019. We are offering MD Ayurveda Kaumara Bhutya program. The syllabus is with the Indian MD program, but the program method is prepared according to the PGIM program method, where the MD trainees have to spend 3-year MD program. After completion of their MD, they have to again be in a post-MD training of 2 years. Then they are offered the MD Kaumara Bhutya specialization with board certification. But before the PGIIM was established, according to the ordinance, the previously qualified scholars cannot be offered the board certification. Therefore, we were awarded a privilege of board certification. And Faculty of Indigenous Medicine, University of Colombo, conduct postgraduate diploma in Kaumara Bhutya in Bala Poshana, and Unani Pediatric PG diploma is in progress. Considering the undergraduate education, Faculty of Indigenous Medicine and Gampaha Wickramarachchi University teach Balaroga in BAMS program, and Unani, it is called as Ilmul Aftal. In Siddha Medicine, in University of Jaffna and Eastern University, it is called as Kushanti Marutuvam. Apart from this postgraduate and undergraduate program,
NITM, the National Institute of Traditional Medicine, conduct many CPD programs for healthcare professionals, doctors, CMOs, IMOs, and other paramedical supportive staff. Human resources, who have been specialized in the field of Kaumarabhutya. We have one emeritus professor, sir has achieved his MD and PhD in BHU, and 4 senior lecturers specialized in Kaumarabhutya, 2 from GAU, including myself, prestigious university, and 2 from NIA. And recently, 2 MD trainees were passed out after completion of first 3 years from our PGIIM, and 2 Siddha MD pediatrician are there. Apart from these specialized resource person, there are many medical officers and other academics, specialized grade doctors, and especially traditional physicians are mainly contributing to the field of Kaumarabhutya. They are successfully managing almost all the pediatric cases with Ayurveda and with our indigenous medicine. Then research. Academics, postgraduate trainees, medical officers, internal medical officers, and undergraduate students also engaging in the field of research. In our UG syllabus, students have to conduct 6 credit of research component, and the research can be categorized as clinical research, drug research and product development, surveys, literature reviews, and finally, they disseminate the knowledge in different platforms. Clinical research mainly conducted with Vata roga such as cerebral palsy, DMD, scoliosis, and other syndromes, and ADHD, autism, skin diseases, respiratory diseases, nutritional diseases, and anemia by the academics and medical officers and MD trainees. And drug research and product development also conducted, in which novel drug development and novel dosage form development are being carried out using the Ayurvedic drug formulae and our traditional indigenous medical drug formulae. In our undergraduate students are now more like for the novel dosage form development by using our traditional indigenous medical formula. They are preparing some weaning foods, cereals, and also some external preparations and some products for baby bath related to the pediatric under the guidance of their responsible academic. For that purpose, in our faculty, a research and development of natural product unit also has been established. I would like to draw your attention to the one of the best indigenous, Sri Lankan indigenous medical formula widely used in pediatric practice. It is called Ratha Kalka. Ratha means denotes the blood related diseases, and Kalka means, you know, the one mode of our dosage form. It is the only Sri Lankan indigenous drug in which research studies have been carried out in covering all the aspects of the drug. Our emeritus professor mainly conducted with other research team. It has proven scientific properties of immune enhancing effect, anti-inflammatory effect, antipyretic effect, antibacterial effect, and proven non-toxicity of Ratha Kalka and microbiological quality standards of Ratha Kalka. And clinical studies also have been carried out, effect of Ratha Kalka on immunoglobulin level in neonates and also in children. Further, effect of Ratha Kalka on Ratha Gaya. Ratha Gaya means blood vitiated disease, especially occurred in Shira and Shiranna period. We can prove the knowledge and wisdom what I said earlier. These research have been proven by using the modern knowledge limited to the knowledge frames. But Ratha Kalka is being given by our grandmothers to our children since 1000 years ago. They did not know the immune enhancing effect, anti-inflammatory effect, but they know that by giving this mainly as a preventive measure, and we can manage many diseases successfully. Even I was also given, and I also gave
my kids as well. How they got this knowledge about Ratakalka? Because through the nature, using their wisdom. Then literature reviews, literature research also been carried out in Ayurveda textbooks as well as all alive manuscript. We have a treasurer of all alive manuscripts in Sri Lanka, also in traditional medical books. After conducting the research, there are several platforms in Sri Lanka to knowledge dissemination. In my faculty, since 2011, annually we are conducting an international conference, ICOST, and we are publishing one journal, Sri Lankan Journal of Indigenous Medicine, and Gampaha University and Siddha Medical Unit also organizing some international conferences. Considering the healthcare in pediatrics, mostly we are combined with the indigenous medicine. In Ayurveda, we have our own Deshiya Chikitsa. For Siddha medicine, they have Tamil Parampari Vaidyam, and in Unani, it is called as Deshiya Ilaj. We are treating mainly, we focus on the prevention and then promoting positive health and then curation with combination of Ayurveda and our own indigenous medicine. Our in National Ayurveda Teaching Hospital, we have well-established pediatric unit. Mainly, we are admitting the kids suffering from many Vata Vished diseases, cerebral palsy, DMD, and ADHD, autism like that. Apart from those diseases, respiratory diseases, skin diseases, joint diseases, and other all the pediatric ailments are managed in OPD successfully with help of combining all Ayurveda and our indigenous medicine, and sometimes we are get the help of Unani medicine as well. Apart from, we have a well-developed physiotherapy unit and yoga center. With the combination of all, we are managing our pediatric diseases. We have well-developed traditional system of medicine in Sri Lanka. Treatment for orthopedic cases, psychological diseases, treatment for burning, treatment of abscess, wounds and cancers, treatment for snake bites and other poisons, and ophthalmology cases. Also, those expert traditional indigenous physicians are treating in pediatric cases also very successfully, and we have our own medicine and our own dosage forms as well, and treatment system also. In Siddha medicine, Kiranti oil and Gorosani pills are mainly used in childhood diseases. Considering Unani medicine, treatment through nutrition is a fundamental approach within Unani system of medicine for managing the pediatric cases. For the betterment of the field of Kaumara Brutti, there are many outreach programs are carried out by our academics, medical officers, especially in community medical officers, such as health awareness program in school and orphanages and nutritional assessment programs, for the mental relaxation of our indoor patients as well as their parents, because they have to stay more than one to 1.5 months in one round. So we are organizing some World Children Day celebration, Kids Talents show for the IPD patients with the support of our undergraduate students who are in the Balaroga Kaumara Brutti practical group, practical rotation in such a specific duration. Then collaboration also very important in the field of Kaumara Brutti in Sri Lanka. We have organized many Kaumara Brutti Sambhasha with support of our extreme Gurujis, our PG teachers from India. We have conducted several series of Kaumara Brutti Sambhasha for postgraduate students as well as undergraduate students. And in my faculty, we prepared lecturer's guide for Balaroga and practical guide for Balaroga. And some collaborations and some research are conducted with the
allopathic system, allopathic doctors, and other field of different disciplines also. Recently, NITM started a project for special needed children. For that project also, our extreme teachers from India also joined. Summary of my presentation. I can say in Sri Lanka, the Kaumarabhutya field is still being developed, but the collaboration is more important within the country with various disciplines and nationally and internationally, and research and development with different disciplines, because our traditional medical books and everything, we can find word. The same word can be found in different disciplines, but the meaning is totally different. If we cannot identify the exact concept which specific to this discipline, we cannot get the proper idea what our ancestors said. Therefore, we have to more collaboration with the other ancient languages department also. After that, with proper anthropological analysis should be the base to get the exact meaning of that word and concept. In conclusion, indigenous way of Kaumarabhutya is still existence and being practiced in Sri Lanka as well as South Asian countries, because it has been accepted by the ancient civilization with proven track records. It has been passed down from generation to generation, and experience and evident, well established in all the type of societies, and it has been practiced everywhere. I believe that this sophisticated traditional knowledge of the ancient people is more advanced and stronger than the 21st century knowledge. Therefore, those practices should be re-established and validated for the betterment of Kaumarabhutya field. In this Kaumarcon 2023 platform, my recommendation is to establish a research and development unit with universities of ancient languages, as I said earlier, to understand the exact concept hidden with the word. We have to collaborate with the subject expert as well as ancient language. It should be a multidisciplinary approach. Then we also can develop the wisdom to communicate with the nature. And I acknowledge Professor P.K. Prajapati sir for giving me this opportunity to be with the giant of the Ayurveda field, especially in Kaumarabhutya, and organizing committee of the Kaumarcon 2023, and all my teachers from nursery to PG. Because of them, I am here in front of you, and my colleagues, students, and my little patients, finally, my family. This is the Sigiri frescoes. I extracted my first slide, and this is Sigiri Fortress, a tourist destination believed as a fortress of King Ravana. You all are welcome to Sri Lanka. Thank you. Thank you very much. संदीप जी करो, आपका करो, हाँ कर दो, आपका करो फिर जीतू जी करेंगे। हाँ जनरेटर पहले से जीतू जी, हाँ हाँ ठीक कर दो। संदीप जी ऑन कर दो। हो गया ऑटो ऑन।
वो ऑन है कि वो ठीक हाँ करिए चल मैं हो गया ठीक हाँ Presently, he is the director of Association of Ayurveda Academy, London. He is one of the members in Complementary Therapeutic Association in London and also with the American Ayurveda Association of Pediatrics, United States of America. Sir, topic is contribution of Ayurveda in child health care. या ठीक हाँ बस ठीक मंचाधीश परमादर वेद प्रकाश ज्ञान प्रकाश तुल्य श्री शर्मा and शर्मणाद्वयं मम मंचा अभिमुखस्त शर्मणाद्वयं च पादद्वयं सदा सहृदयपूर्वकं प्रणतोस्मि नित्यं श्री गुरुदेव नमस्कृत्यम प्रोफेसर नीरज गुप्ता सर जी, जीपी गर्ग सर जी, बीएस शर्मा सर जी एंड ऑल अदर हमारा प्रजापति सर जी, वेदव्यास and many other dignitaries and my dear friends and students. The subject of contribution of Ayurveda into the prestigious, precious stage of the motherhood, and we understand how significant motherhood in the human life, and that significant part has to be played a great dignity and responsibility on us, which the wisdom has eternally flown with the knowledge coming from Ayurveda in the Sanskrit. And that is where the contribution starts for the mother and child welfare, globally being verified today and being practiced, experienced. I am here to share with you, especially to my beloved young students, the reason why I am over here, and it is not impossible to say where I belong to now, the Bhrutya group in the detour of the world, Kaumara Bhrutya. Though I am from Dravyaguna department, being settled over 2 decades in UK and Europe, and first ever being in Johns Hopkins Medical University in Baltimore in 1989. The importance and significance of the parting this mother and child health and welfare has begun with my troop where I belong to is now detouring. And why is it so important? The reason why, because all the royal families in the United Kingdom, in the Prince Charles, and you all know, into the Saukyam hospitals of the Bangalore, and his son Meghan Markle and William Harry in Goa. And then it is not the royal families of United Kingdom, but it is the royal families of African Kingdom as well, and many more. They have entered into the Hollywood and triggered Hollywood actresses who got delivered by our troupe. He is significantly led into the Bollywood group. Recently I was in August in New Delhi with the Kapoor families, and I should not disclose, with the Meghan Markle families. And first delivery, when I saw, it's not my pulse reading is the priority, because I'm very little in that knowledge, to see her belly part and round part. And the significance of Ayurveda to say that if it is a round into the shape, is the male child. And she astonished to look into that. How could you tell? And it will be a male boy. And then I started sharing my experiences,
I am not invited into the mansions of these royal families' deliveries. And my role is very clear into the innovation, into the creativity, integration of these protocols, where gentlebirthmethod.com. I repeat, gentlebirthmethod.com. Not everything is being shown onto the media because it is the royal families, it is the Hollywood-backed actresses, it is the Bollywood families. They follow Ayurveda very well. And this is the glory where we are belonging to, into the prestigious mother and child welfare is being restored from the quality control of the delivery at the beginning, not just only from the child health care into the enormous state of contributions which begins from preconceptual stages. Preconceptual stages and as life before it has been begun, how much is there for us to offer into the global industry of the wellness being established? With our beloved Prime Minister has started ever with this Ayush Ministry and signing over 70 plus countries among 194 countries. And the significance of these wellness industries, in all over Europe we have these resorts where these celebrities will go, and in screening of both the partners who wish to conceive is being monitored by one of the dignitaries like me. It is proud to be in front of into this Bhritya team. It is not my greatness. It is an opportunity to serve into the higher societies, and where it has to be, fortunately, be accepted well into the Bharat, because the Bharat is the country which has begun with this wisdom, and unfortunately we are not following it all into the full extent. Until it comes from the West, is only being accepted. That we have to create and change into the protocols of the preconceptual to prenatal, natal, postnatal, neonatal, and you can see until the childhood being completed at the stages of Shodasha Varshani. Gurudevji, Namaskar. And implementations of such noble wisdom from the past is the biggest task now into the management, how it should be critically cared and implemented, imparted into the knowledge from the prevention aspect of things. That's what may where I'm very much concerned about it. If I tell one example, I should not take much of that, you can just instantly see. If we are going for the Raktashali, and the Raktashali red rice from the France, red rice from the Spain, red rice from Sri Lanka, red rice from different countries. And I teach in my students with the practicals. All the students will be learning, getting the market samples from London's groceries, and they kept it here with the bias that which red rice is from which country. It's not disclosed. And you cook them, and practically we see in the Middlesex University, Thames Valley University, where I was teaching since 2001. And what is the Guru, Snigdha, Pichila? These are the three qualities being assessed for the quality of this Raktashali, which is going to restore as a basis of the therapeutic Patya Ahara. And we talk about the Raktashali qualifications, and then coming to the Gotukola, Vellari, Central Asiatica, huge bundles comes from Sri Lanka. Every day we have in these markets. What is that miracle vegetable? And that is the basis of the A2 ghee, which is from the Girnar cows, and the qualifying the ghee practicals has been done, verifying what is the unsalted butter varieties which are being found in the entire UK is being selected, and quality grade preparations of the medicated ghee being fortified with this Gotukola Vellari, moringa leaves and betel leaves and so on, the fresh turmeric and whatnot. We prepare the therapeutic A2 ghee from these Gir cows, and I'm also working with these exporting faculties, lots of indigenous cows. When it comes to this Mumbai, and as well as with this Jindal family and also the Kapoor family, in their farm houses, and monitoring these indigenous cows, and Mashaparna Prabhritiyam, Arjunaparna Prabhritiyam, you all know Mudgaparna Prabhritiyam,
And that is where the quality has to be restored into the nourishing for the welfare of the mother in childhood before it is being born, into the screening methods, into the imparting the quality of this nutritional food as medicine. And that's what the gut medicine, that's what personalized care, where we have to build up and educating these bigger groups. Unfortunately, except I have seen Akshay Kumar, who boasts and tells about these treatments of Ayurveda, none of the celebrities, none of the royal families are not there to talk about it openly. That's a secrecy. And then looking from those point of view, and that is the task of wisdom to impart now. In fact, it is the most advanced in conventional research, which is the recent advances, what it is being shown in the conventional little medicine, and that is evidenced from latest extent of this unfold ancient wisdom is hidden. And selective elective, what I am going to share in my presentations, and the concerns about the attention deficit hyperactive disorders, autistic tendencies which are being grown. And you can see, just refer to my abstract, what I have already given to you. In 2020, 2,226 infant deaths under the age of 1 year and 789 child deaths under the age of 1 to 15 years occurred in England and Wales. These are the lowest numbers of infant and child mortality since records began in 1980. Among above 150 unexplained deaths of infants aged under 1 year during 2020, statistics according to the census 2021, Office for National Statistics, United Kingdom. This is the report, you can check online. In global consensus, child mortality under 5 years is estimated over 5 million children from mostly preventable and treatable causes according to the WHO census during 2020 and being reported on 28 January 22 report. And these are all the evidences to show, in spite of our developing countries, developed countries, and many infrastructures, much we have evolved into the neonatal care, to the establishment of all the technology. In spite of that, why this mortality, why sudden infant death syndrome is being present? And that is where we have to find the reasons. Hetus coming from Ayurveda point of view. And we have the Karma Vipaka Siddhanta, we have the Balagraha, and this is where Daiva Vyapashraya Chikitsa has to be taking place. And that Ayurveda rituals I am mostly taking on into the practices where I am interested, from the nutritional medicine, food as medicine, to the Daiva Vyapashraya Chikitsa, Mantra Chikitsas. And that is where I am practicing in UK and Europe at the moment. Unexplained cord death syndrome, and then postnatal depressions, that's the biggest problem. And when the mother is delivered the baby after a couple of days of a normal delivery, and she takes her baby in a buggy and then goes for the shopping in United Kingdom. Have you ever seen this? And where we have the partition period and postnatal restoration in our culture and tradition is not less than 45 days. 6 weeks, 7 weeks, and they are not allowed to go and see. And in spite of this critical care period is the 10 days period. Very crucial that the mother and child should be cared. Even shoes cannot be entered into the Prasuta Agara, you all well know. And it is not that hospital anybody can enter with the shoes. It's so unfortunate that we have parting most of the knowledge in national health services, and where now gradually all different communities with their faiths, they are allowed to enter into the labor room along with the husband and one attendant. The music therapies, the sound therapies, the chantings, the prayings, the plants, we are all allowed. And then that support is being given for the easy delivery, which is being a support, and a mental and environment is created for this mother to deliver safely. And there are so many mothers who wish to deliver at home in UK with the waterproof birth deliveries,
and they prefer all the nurses coming into their homes, and then safe deliveries are being practiced with these complementing systems of the healthcare. One among all is Abhyanga to the Parisheka, all the treatments are being done from Ayurveda point of view at their houses, where the NHS staff will come and deliver at your home. And this is what the scenario being changed. And unfortunately, I would say that this is the era where we are living in the Kali. It is only a quarter level of that righteousness is being to restore to achieve this 100%. If you are able to transform at the 25% level is equivalent to 100%. The Skala Dharma, nothing can be taken out of it. 2/3 will be the Adharma. And that what we are experiencing. How many cesarean sections, unfortunately, being done in India, which are not necessary at all. And I would say that how many hospitals are being corrupting with this corporate business. Health is a business. It's not the service. And that is, we have to know, because we are living in this critical Kali era where we cannot have that kind of 100% results from these dharma practices. We lost that. And we are only into the artha. Artha will follow the dharma. That we don't understand. I know, including myself. When I started practicing after BAMS in 1984, what was my options to go for the conventional medicine, being rural area, and then we fought unnecessarily, and with this, okay, my equal importance चाहिए, हमको एलोपैथी दवाएं यूज करने के लिए परमिशन चाहिए, क्या मालूम था? आयुर्वेद में सब कुछ है, एलोपैथिक कुछ जरूरत है ही नहीं है. That is what the reality for exclusively to integrate at the level of the critical care conditions, life-saving conditions, infectious diseases, surgical interventions, traumas, and then early detections of the cancers. These are the things where we need our allopathic hospitals, not for the chronic care managements, not for the systemic ailments like the liver diseases, nothing. Ayurveda has a lot to scope and offer for these conditions. That part of the integration is needed at this hour, as Dr. rightly said. And then you can see the kinship and treatments of the newborn, resuscitation methods in the presentations. And my grandchildren are born in NHS, 3 grandchildren. And my wife goes there and plays this Lalita Sahasranama and Vishnu Sahasranama. And you can see how significantly that is so important for this Navajata Shishu Jwara, which it comes. And these musical therapies are being allowed rightly into the NHS practices. That's the biggest boon. But when you go and see in the maternity, the breast milk, when it is being collected, it's so unfortunate to say that already the breast milk, different colors you can see being put in the fridge. And they name the labels and this mother, and then they come after that. They can be used, being stored into this fridge over 24 hours or more than that. And some references I will show you here, it says that 1 month, how can you store this breast milk? Is it the science where we are living? And when we have this Shankha, Tulya, Sthanya, which is very simple to test into the droplet of this pure water, and then easily detect the dosha, which is present with the streaks of this kapha dosha, pitta dosha, or vata dosha. And where is this simple knowledge being not understood that the working mothers, they just preserve this breast milk pumped and being stored into the refrigerators. This is where we are fighting. This is where we are trying to educate the people. This is where rightly the babies will get tummy upset. And they don't have any medicines to simply things. And that is where the integration is required into the services where we are working into our Bharat itself. That we have another task, difficulties we are facing here. And you can see the kinship as because it is the most important thing now that soon after the delivery is done in the NHS hospitals, the baby is being put with the placenta itself onto the mother's chest. First thing is they put onto the mother's chest. And this is where they are learning now to how important the mother's warmthness has to be, and then security. The placenta, yesterday somebody was talking about artificial placentas and how significant it is, the correct time to disconnect. So these are all the things which are giving an enormous prosperity for this new life to breathe into the full extent of its development. That is where we are already doing Navajata Shishu Paricharyas. So they are learning now. When I see, and that's what I say, that whole wisdom which is being unfolded in the past is just the rediscovery.
And then this is just where we belong to and what is it is in UK and all over Europe, and these are all our associations. And then you can see into this labor room descriptions, it's not very clear for you to see what are the herbs, raspberry to cohosh, and so many plants are being allowed for easy access deliveries, where we have like langali and whatnot. This langali you can hold in the hands or the tie onto the waist. There are so many things are there, and if not the sarpa, nirmoka, such kind of the dhupas, when we are not able to give the medicated gifts for the easing up of this passage, and that is being allowed to practice in NHS. That's where we succeeded into the external applications, non-invasive protocols of the critical care of the mother for easy labor is being supported healthily. And this is what the Center of Excellence, our Honorable Prime Minister Modi ji came, and it is established in UK, and it's where we are working through with this many groups over there, all parliamentary party group, regularly conducting international yoga Ayurveda days in the Houses of Parliament. In fact, all the members of parliamentarians, they are all experienced Ayurveda treatments being in Kerala. And that's what they are supporting for Indian traditional systems of health and wellness, including David Cameron's wife, who celebrates the Diwali. Now we can say that it's not Asian Prime Minister anymore. So there are so many people are there supportive for our culture and traditions, and we are going far away from it and being westernized into the life and food habits, and we are not recognizing our heritage, where the Western world is more recognizing the natural ways of the living means. That we have to restore back. It is our knowledge, and first we have to be benefited from it. And this is 1890s where establishment of these Cambridge Ayurveda centers and being practiced, and educational activities is being conducted. Also in Croatia, government affiliation of our associations working, and so many batches came out, and that's my journey. And this is what you can see, an advert coming into the facing, a parent facing pushchair allows you to give your baby reassuring eye contact, helping them to relax. Talking to your baby, even if they cannot respond, is crucial for their language development. Is this kind of advertisement you can see? And that is where they are learning. And we already have this. So that kind of the mental development milestones, where Ayurveda has a stepwise, has to be reintroduced with this most of our critical cares from our troop, where I'm working in UK and Europe and elsewhere, and all our patients are coming from this Mumbai and Delhi based celebrities. New still is going on. And that is unexplained death cause syndrome is nothing but the Jata Harini and Balagrahas. That is obvious. In those conditions, then where we have the Sikata, and then Sarvatobhadra Mandalam, Chatushashti Yogini, Matruka Pujanam, Kalasha Sthapanam, and then the Punyaha Vachanam, Swasti Vachanam, and then Kashyapa Samhitas to the different smritis, where we are collecting and rituals are being done exclusively Mani, Mangala, Bali, Homa, in all aspects it's being. Astrological calculations and the gems to the Kushmanda, to the Krishnatila for the sacrifices. And these are all the practices which we lost, because it's already there in Astanga Hrudaya saying about the importance of the Sikata sand. And you look at it, and we build these different sand belts, and then this plant material of the lotus, and as well as to this palasha, patras for the making these lamps, Agni, Samskara, Agni, Sikata, Guruta, Panchagavya. And that is where we are concentrating into this mind development, child's mind development protocols, which are the utmost into the artistic tendencies to the so many developmental dysfunctions are being addressed with these natural protocols of these Ayurvedic materials. You tell we have, and Bilva, fresh leaves, we can get it. Basil, Tulasi we have. Darba, which is the most important, significant. And so many things are there. Amara Guruji, he knows about all these rituals, how significant Daiva Vyapashraya Chikitsa should be incorporated into the modern way of giving Ayurveda rituals into the
prestigious, honorable families who are following in star hotels. We are all doing. And Raksha Karmas we are doing. And that is where you can see some of the slides missing because this is the old version, new version I have already given. Anyway, so I want to highlight into the other aspects of this mental development, cultural diversities, variations, and that is the boundaries we have to understand. When I see so many differences of these children, and they're unfortunate because you have everything as a means of care and freedom in UK as a childhood, and you are the most powerful representing ages in your society, but that is being misused into the schools. If you go, the unfortunate, the school menus, which are being filtered and just boiled and all the essential being thrown out, and they don't know what the kind of the jelly, kind of the sweets they eat, and junk food. That is where we are more concentrating onto that. Everything is available, how tastefully Dr. Sir has explained from these millets, but we have the kushmanda, Benincasa hispida, that is a wonder vegetable for the development of the brain to the not mother and child welfare. That's where we are preparing. And fresh juices preparations, and you can see the kind of the quality of the honey. It is not the honey what you can see anymore as a natural cold pressed wild forest honeys coming out from the Portugal bitter honeys. Now you know the 8 kinds of honeys, where I can buy a pure honey. Can you tell me? Even if you go onto the roadside, they keep into the bucket the huge amount of this honeycomb, which is also artificial with this jaggery water or other things are being fed. And that is unfortunate into the bee cultures as well. We are feeding the sugars for the bees and to get the honey for therapeutic benefits. It doesn't happen. And that is where we have the natural different floral wild forest unpasteurized honeys to be imported. And when I talked about this into the parliamentarians, we don't give honey to the neonatals. And that has to be changed. And in our pharmacies, 30, 40 pharmacies in London, I worked, and Bristol and many places, educating the same that when honeys are being kept into the pharmacies, they have this outrightly put the expiry date. And we know that how honey cannot be expired. And we know that the A2 ghee, how it can be Purana Gruta for the Kumbha Grutam, Shatavarsham, Dashavarsham. Why not our institutes to have these labels prepared? In every institute, the A2 ghee from the Gir cows, Dangi cows, Punganur cows, so many cows, which we have still belonging to the Kamadhenu Nandini. That quality we have to be impart into the social knowledge. And by looking the Shrungas, by looking the Pucha, by looking the Pancha Vrittas, and then the ages, teeth, and how much is the quality control Ayurveda has given to you? Mother and calf, the baby color and concepts, the sizes of the Shrungas to the harness, how they are faced downwards, and to the shape and forms of this mother coming, it's mother. That's the Kamadhenu Nandini which is being imported, and that Panchagava we have to collect. And that has a miracles to show that already in the Gir cows, you can see the gold is being extracted out of this urine, that we know that. So we are educating on that to bring that the quality of this dairy. Otherwise, we are all allergic. Peanut allergies, nut allergies, and dairy allergies, gluten allergy. Why is it? Because there is no quality. We have all these GM crops. And you know what? The spelt from the Italian variety of this wheat, where we use for our these. If you say the kalonji and spelt like wheat and barley, as I said rightly, and all edible gums, and kamarkas, palasha gum, and butia gum, gum kino, gum karaya, gum katira, all these edible gums. So these are the 4 ingredients when we make concocted and a wonderful detox and postnatal drink. And so many are there from the food as a medicine based preparations, from the basic level of the Raktashali to the mudga, mung beans. And we all know the mung beans, the dual varieties, bigger variety, smaller variety, coming from Shastika variety of the smaller one. And before that it's being toasted and well prepared into the Patya Kalpanas. When the A2 ghee is being added and Vellari, that's it.
That food is sufficient for to detox the mother, breast milk, everything, from the diet point of view. Now you talk about so many things are there, Sanishodhana Ganas, and many things. Due to the time restraint, what we have been given, and there is so much to impart this knowledge, this is just a boon for you to wake up, call for yourself that how much do you have and how much it can be financially sustainable into the development of these wellness centers, where now our government supports for you to establish and become. And Tedros said that whole world is looking towards Bharat for these traditional systems of the Global Wellness Center established in Jamnagar, and Bharat has to be looking around into the integrating 194 plus countries into the rest of the world. Vasudhaiva Kutumbakam, one nation, one health, one system of the health restoration into the one identity. Satsang, Jai Hum, Namaste, Swasti. Now I invite Dr. Yashasvi to further coordinate this session. Respected dais dignitaries on the dais, of the dais. Now I request Mr. Sushil Sharma ji, CEO of Marwari Catalyst, to kindly come up on dais. I request Dr. Rashmi Sharma ma'am, Associate Professor, to kindly hand over bouquet to Sushil ji. Thank you, ma'am. Mr. Sushil Sharma ji is the man who ignited the startup revolution in the Rajasthan. Currently, he is an CEO of Marwari Catalyst. Professionally an angel investor, he has invested in 75 plus startups with 35% startups led by women co-founders, and has a 130 plus co-founders, thereby inspiring and leading a strong team of successful startup founders, professionals, industrialists, and educationists. Sir, I request you to commence with your lecture. Thank you. God bless. MCAT. God bless. ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। हो गया? Good afternoon, everyone. Can you hear me? So, हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी हो गई है. डू यू एग्री ऑन दिस? एंड स्टार्टअप मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारा वैलिडेशन होता है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, ब्रांड्स होती हैं. और आई होप हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी भी ब्रांड हो, हम सबके पास बहुत सारा पैसा हो, शायद पैसा वैलिडेशन होता है. डू यू एग्री ऑन दिस? अब हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे बिकॉज आई एम समबडी हु मे नॉट नो आयुर्वेदा, बट आई एम एक्साइटेड टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई बिलीव together we have to strengthen the startup ecosystem in Ayurveda University, in Ayurveda category. Do you all agree on this? Yes. So हम लोग, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना. So I am a brand ambassador of government of Rajasthan to connect to all the Rajasthanis living outside Rajasthan. I am also a convener for ESC, Electronics and Software Export Promotion. I have traveled 30 plus countries and almost 20 plus countries. I have represented India for a technology. With this, I have also been ranked in the top 50 founders globally as most innovative and fastest growing people in the world with a term called Crunchbase. जैसे आप Forbes का नाम सुना होगा आप सबने. Similarly, Crunchbase is a platform which talks about the most innovative and fastest growing people. So my rank is under 50 from almost a year.
And now I have invested in personal capacity, I have invested in more than 50 startups in last 3 years. When I say about Marwadi Catalyst, we have evaluated around 6,000 startups in last 6,000 startups मैंने पिछले 3 साल में evaluate किया, हमारी टीम ने evaluate किए। हमारे पास लगभग 130 फाउंडर्स का क्लब है, हम 7 स्टार्टअप से एग्जिट कर चुके हैं, टोटल पोर्टफोलियो इज अराउंड 100 करोड़। आपको ये भी मालूम होगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जब इवॉल्व हो रहा है, लगभग 119, 120, 120 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आर इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द स्टार्टअप्स इज इन आयुर्वेदा। So that's the biggest challenge, because I feel that if person like me is getting motivated to be a part of this conference, and I believe this conference is all about innovation, it's all about doing something good for the society globally, and I think I see at least 5 or 6 startup ideas when I was sitting here and listening to my fellow speakers. तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में करना चाहिए। मैं थोड़ा सा और आपको शेयर करूंगा हम क्यों मारवाड़ी कैटलिस्ट में। So we are established in Jodhpur, we are headquartered in Jodhpur, and Jodhpur is known as a tier 3 city, not even a tier 1. It is not considered as metro. We do not consider it as tier 2 because Jaipur, Pune, Hyderabad, those places are known as tier 2. We consider Jodhpur as tier 3 city in India, but we operate from here. But the only thing is what we have done, and that's the same motto of my presentation. We have invited some successful startup founders, the ones who have sold their company from 200 crores to 2000 crores. ऐसे कुछ लोगों को invite किया जिन्होंने 200 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक की कंपनीज बनाई और बेची। ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स को बनाया जिन्होंने बहुत सक्सेस स्टोरीज बनाई, और ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया गया मारवाड़ी कैटलिस्ट में जिन लोगों ने अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसा डाला और वो बहुत पॉजिटिव बाय नेचर है। तो ये है मारवाड़ी कैटलिस्ट का बेसिक बैकग्राउंड। मैं थोड़ा और शेयर करता हूँ कि हमारी लगभग 70 स्टार्टअप्स है, उसके बारे में पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया। ये घड़ी जो मैंने पहन रखी है ये भी मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है कॉल्ड जयपुर वॉच कंपनी। मैंने जो जीन्स पहन रखी है ये मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है, मैंने सॉक्स पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखा है, ये सब मेरी पोर्टफोलियो कंपनी। और एक बहुत छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा, ये घड़ी जैसे मैंने पहन रखी है इसका नाम है जयपुर वॉच कंपनी, राइट। सिंपल घड़ी है और इसमें सिर्फ क्या किया इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को वॉचेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। क्या किया सर? इंडियन हिस्ट्री को वॉचेस के साथ। एंड आई विल शेयर यू अ केस स्टडी। When we associated 18 months back, this company was just 3 crore valuation, and today this startup is 75 crores. How much? They have done 3 rounds, 7 crores, 18 crores, 40 crores, and right now the startup is at 75 crores. क्या करती है सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को, ये 1 रुपए का कॉइन है उसको घड़ी में डाल दिया है। So to my fellow international delegates, this watch is called Jaipur Watch Company. They've just incorporated Indian history, connected Indian history with the watch, and the company is valued $10 million. So what I mean to say is that Ayurveda, when I was listening, there are so many good theories about it. The only thing is the marketing, the branding has not been done in a way. So कुछ नहीं किया है, बस एक छोटा सा कपन डाल दिया है। If I say about this jeans which I'm wearing, it's called TURMS, TURMS. It is anti-stain, anti-dust, anti-odor. कुछ नहीं है, चाय और पानी गिराओगे, केमिकल एक सिंपल सा केमिकल है, इफ यू वॉश इट मतलब पानी नहीं गिरता है, वाइन का दाग नहीं लगता है, सिर्फ एक क्वालिटी है। But the only thing is they have marketed that very well, and the only reason when we associated it was nothing, and today because of the marketing we are doing almost like $200,000 business a month. ये कंपनी 2 करोड़ रुपए में थी, मैंने 1 साल पहले लगाया था, और आज ये कंपनी 50 करोड़ वैल्यूएशन की है। So when I was listening to all the fellow speakers, I've seen there are so many good things which we can talk. The only thing is we have to market itself, we have to coordinate, we have to understand the value कि हमारी स्टार्टअप की या हमारे बिजनेस की वो वैल्यू हो सकती है, हमारी रिसर्च की वो वैल्यू हो सकती है, and these things can be sold globally. The only thing is to all our researchers who comes with the innovative ideas, to all the people who are sitting on the other side as mentors, and the people who are also a fellow industrialists, they will have to accept कि हम एक अच्छी सक्सेस स्टोरी बना। हो सकता है पैसा सिर्फ एक वैलिडेशन हो, बट फिर भी अगर ये वैलिडेशन होता है तो वैलिडेशन होना चाहिए। So in last 70 startup we have none of the startups from Ayurveda. Vidyanvan,
cohort for climate change. और मुझे लगता है कि जितना हम लोग कॉन्फ्रेंस में और इवेंट्स में जा रहे हैं, हर जगह बात चल रही है, लेकिन जब तक ये रूट से शुरू नहीं होगा, जब तक हम इसको रूट से स्टार्टअप, इनोवेशन, बिजनेस को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसका मजा नहीं आएगा। तो मेरा ये सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपने स्टार्टअप मोड में, बिजनेस मोड में, और स्टार्टअप और बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हम लोग मैं आपको एक बात और शेयर कर रहा हूँ, मारवाड़ी कैटलिस्ट में मैं फाउंडर CEO हूँ, मेरे पास लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, और मैं एक बैक बेंचर था। I've studied from Jodhpur and I've got back in 10th, back in 12th, and then did my graduation with 37%. But still, because of the knowledge, because of the mentors I've been surrounded, because of people I've lived my life with. And again, one thing which is very important is the global exposure. पहले हमें बाहर जाना पड़ता था. Now the best part is the global partners are coming here. I can see people from Japan, from Sri Lanka. तो आपका जितना global exposure होगा, so I think specific request to all the students कि आपको उस network का, उस knowledge का impart करना चाहिए. I think that was the biggest beauty. Even I was a backbencher, I was able to get knowledge, I was able to get the international exposure, and because of this, whatever we have done, I have built that. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए, स्टार्टअप में बनाने के लिए। हो सकता है ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरे पास आइडिया अच्छा है, सर आपके किसी भी स्टूडेंट को लगता है मेरा आइडिया अच्छा है, बट देयर आर सम मोर कंपोनेंट्स। सो एनी एक्सेलरेटर, मारवाड़ी कैटलिस्ट एक्सेलरेटर, हम क्या कर सकते हैं उसकी लाइफ में? हम उसको प्रीमियम कस्टमर दिखा सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं केस स्टडी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है लास्ट में हम थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखेंगे। एक घड़ी पहनी, मैंने पहनी, या किसी भी स्टूडेंट ने पहनी, इज्जत नहीं होती है, बट अगर कोई सेलिब्रिटी पहन लेगा तो उसकी मार्केट में इज्जत हो जाती है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हेल्प देम इन गेटिंग अ प्रीमियम कस्टमर्स, वी हेल्प देम गेटिंग ब्रांडिंग, वी हेल्प देम गेटिंग अ को-इन्वेस्टमेंट्स, वी हेल्प देम गेटिंग अ मीडिया, हंटिंग फॉर अ को-फाउंडर। बहुत छोटी सी बात है, आप आयुर्वेदा में अच्छे हो, आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो, आप ब्रांडिंग में अच्छे नहीं हो, आप शायद सोशल मीडिया पे अच्छे नहीं हो। सो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू जस्ट हैव टू हैव वन मोर पर्सन हु इज योर पार्टनर, हु इज योर को-फाउंडर, एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक अस हु कैन फैसिलिटेट यू दिस। आपको सिर्फ अपना मोटिवेशन, अपना फोकस और अपनी बेसिक तैयारी करनी है। आपका जो वीकनेस है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, और हमारे जैसे लोग इसको कर सकते हैं। फंड रेजिंग, स्ट्रैटेजी, स्पेस। एंड मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने अभी देखी, मुझे याद नहीं कि कहा दिया कि इंडिया में लगभग हर यूनिवर्सिटीज में स्टार्टअप्स और कोवर्किंग स्पेस और इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है। द ओनली थिंग इज, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, यू हैव टू एक्टिवली कम एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज मैं इसको बहुत क्लियरली देखता हूँ कि हर इन्वेस्टर आके देखेगा, अगर आप वहां पर अवेलेबल हो तो वहां मिलेगा। सिमिलरली लीगल एडवाइस बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद से हैं, हमें लीगल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन जस्ट हैव सम कंसल्टेंट हु कैन हेल्प यू। यू डोंट, आपको उसके लिए को-फाउंडर भी नहीं चाहिए। आपके यहाँ किसी भी कॉलेज में, इंडिया और इंटरनेशनली, एवरी कॉलेज usually have an incubation, they have legal, technical, financial people who can support you, and then you must have to actively participate. तो मैं आपको एग्जांपल शेयर, टर्म्स कंपनी को हमने 1.5 करोड़ में हमने लिया था, टुडे इट इज 40 करोड़, 40 का भी राउंड हो गया, 60 करोड़ पे हो गई है। हमारी एक कंपनी वैल्यूशनरी थी, जयपुर वॉच कंपनी, हम लोगों ने 4 करोड़ पे लिया, आज 60 करोड़। तो आपको सिर्फ डिसाइड करना पड़ेगा, मोटिवेशन होना पड़ेगा। मैं और छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपको लोकल इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, जोधपुर जैसे शहर में शायद 25, 30, 50 स्टार्टअप्स होंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, ये बुक कैनवस, टर्म्स, कॉफी रिलम, इंश्योरेंस पड़ोसी, रेवोकॉन, क्लाइंट केयर, लिट्रॉम, साथी। सो ये अगर छोटे से शहर में भी अगर स्टार्टअप्स आ सकती हैं, तो आपको लोकल सिस्टम अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोबल मार्केट इज अवेलेबल। The only thing is you have to actively Google it, explore it, and you have to be available in the conferences. We do a conference every year, national conference, and वहाँ में एक डॉक्टर वैद्या करके एक स्टार्टअप है जिनसे मिला, अर्जुन वैद्या करके, वो मेरे यहाँ स्पीकर थे। उन्होंने अपनी कंपनी में 45 करोड़ रुपीस रेज किए और 200 करोड़ रुपीस में एक कंपनी बेच दी। This was exciting. And then I realized that this fellow is aggressively waiting for
startups from Ayurveda to come and invest. The only thing is there must be some startups. तो मैंने कुछ case study share किए यहाँ पर कि from raising a 45 crore rupees to selling a company at 100 crores, 15 crores, 5 crores, 300 crores fundraise. So there are a couple of startups in India, the ones who are raising it. So if there are some participation from industries, yes, we have to be optimistic. If there are some researchers, you have to research it and you have to be available with the right set of people so that उसको next level पे ले जाया जाए. And similarly, for all the academicians, that you have to promote entrepreneurship in the organization so that everybody flaunts it. This hall is supposed to be, this has to be a biggest flaunt value. The way आपने देखा yoga को flaunt बना दिया है across the globe, Ayurveda is supposed to be flaunted bigger, better, because it improves your life, it is improved for your health and for your mind. So why to start a startup nowadays? Why now? First, India is the best time for youth to start a startup, because every small city, every big city, every university, there is an ecosystem. From startup fundraising to incubation centers to mentors. That is one. Second, a special request to all the students to start startup, because you don't have to worry about failure. जब आप एक स्टेज पे आते हो तो आपको फेलियर का डर होता है, आपको भी फेलियर का कोई डर नहीं है. तीसरा, मैं क्योंकि टेबल के अपोजिट साइड पे बैठा हूँ, there are a lot of people who are aggressively looking and watching Ayurveda University from close कि यार कोई अच्छा स्टार्टअप आए तो हम फ्लॉन्ट करें. एक चीज जो स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल तो सब लोग करते होंगे, न्यूज़ भी सुनते होंगे, मुझे लगता है आप सबको पता चलेगा जितनी भी ये कंपनी है यूनिकॉर्न्स बनी है. यूनिकॉर्न मतलब लगभग 8,000 करोड़ की कंपनी. इसमें से कोई भी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है. It's only the marketing and the branding has been done in a right way. आप लोगों ने सुना है ना कि स्टार्टअप्स बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, सुना है न्यूज़ में. So I think you don't have to look at profitability, you have to be available at right places. बाद में आपने एक स्टार्टअप तैयार की, जरूरी नहीं है कि आप उसको 8,000 करोड़ तक ले जाओ. आप 10, 15, 20, 50, 100 करोड़ कुछ भी ले जाके आप एग्जिट कर सकते हो. फिर आपने दूसरा बिजनेस शुरू किया. So बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत सारी अवेलेबल है. एवरी स्टेट, एवरी सिटी, ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर इज डूइंग वन कॉन्फ्रेंस. तो आपको नॉलेज का जो इम्पैक्ट है वो आपको मिल जाता है. आपको इंक्यूबेशन सेंटर है, और मुझे लगता है कि आई वोंट से देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ फंड्स. मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की, तो लगभग सारे ही स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में और सारे ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों की तरफ से ही 5 लाख रुपीज टू 50 लाख रुपीज की ग्रांट्स या फंडिंग अवेलेबल है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी अवेलेबल, यू हैव टू बी अवेयर, एंड आपको अवेलेबल भी होना चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और आपका आइडिया कंपैरेटिवली रेडी भी होना चाहिए नेक्स्ट लीग पे जाने के लिए. तो टाइमिंग में कोई कमी नहीं है. इट इज ओनली दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड देन यस वी हैव सीन इंटरनेशनली देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन इंडिया फॉर स्टार्टअप, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अभी क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, गुड हेल्थ, ऑर्गेनिक, मिलेट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. तो अगर आपका पोजिशनिंग अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है और फोकस अच्छा है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है. ये एक छोटी सी स्लाइड है जो मुझे लगता है हर आदमी को, हर स्टूडेंट को, हर प्रोफेसर को, हर एकेडमिशियन को मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ स्टेज कॉल्ड प्री इंक्यूबेशन. मतलब आपका आइडिया वैलिडेट है या नहीं है, यू मस्ट नो अबाउट इट. टू गेट दिस नॉलेज देयर आर प्री इंक्यूबेशन एरियाज अक्रॉस इंडिया जहां आप जाके अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो. और वो कौन वैलिडेट करते हैं? जिन लोगों को ग्लोबल या नेशनल एक्सपोजर है, जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस किया है. दैट इज वन. सेकेंड स्टेज इज नोन एज इंक्यूबेशन, विच मीन्स कि आपको अपनी कंपनी को लीगली तैयार करना है. तो जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी एकेडमिशियन को अगर स्टार्टअप करनी है, सो यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट द नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जहां आपको लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल बेसिक लॉन्च करने के लिए आपको वो फैसिलिटेट करेगा. फिर रोल आता है एक्सेलरेटर का. आपका अगर आइडिया वैलिडेट हो गया, आपने कोई सैंपल बनाया या प्रोडक्ट बनाया, उसकी बेसिक पैकेजिंग की, और वो मतलब उसके 100 सैंपल, 1000 सैंपल बिक गए, या आपने जोधपुर पे लॉन्च किया, अच्छा हो गया, यू नीड स्केलेबिलिटी. नाउ यू हैव टू गो टू द एक्सेलरेटर, देन यू हैव टू गो फॉर फंडिंग, एंड देन यू हैव टू गो एंड अटेंड द इवेंट सो दैट यू कैन make it much bigger or you may exit. So the only thing is, as a academician, as a student, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका आइडिया वैलिडेटेड है तो आपको एक्सेलरेटर के पास जाना है. अगर आपको अपने को आइडिया वैलिडेट कराना है तो प्री इंक्यूबेशन जाना है. और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे स्टार्ट करना है, तो आपको
इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाना है। एंड फाइनली इफ यू फील दैट नाउ यू आर रेडी, सो ऑल इंक्यूबेट, ऑल एक्सेलरेटर्स जो हम लोग, जैसे मैंने 70 स्टार्टअप बताया, सो ऑल द स्टार्टअप्स विल व्हिच वी एक्सेलरेट, वी राइट अ स्मॉल चेक। सो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, इन्वेस्टर भी आपको ढूंढता है। और अगर आप एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर्स के थ्रू राइट चैनल से जाओगे तो ये लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो आपको सिर्फ अपना रोल, अपना प्लान करना है। और अगर इस चार्ट को आप याद रखोगे, सो आई थिंक लाइफ ऑफ ऑल द अर्ली स्टेज फाउंडर्स विल बी वेरी इजी। एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉर द रिसर्चर, बट द ओनली थिंग इज, अगर आप एक रिसर्च करो, एक प्लान करो, उस पर एक्टिवेट करोगे तो ही इन्वेस्टमेंट मिलता है यूजुअली। वी डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन इंडिया। बहुत सारे लोग, मतलब सुनील सेठी से लेके, कुमार विश्वास से लेके और कैलाश खेर से लेके, ये लोग हमारी स्टार्टअप में डालते हैं। आपको बहुत अचंभा होगा, ये जो बंदा है डेली हंट करके एक न्यूज़पेपर आता है, सो लोगों ने सुना हो डिजिटल। सो दिस न्यूज़पेपर इज अ $5 बिलियन कंपनी, 45,000 करोड़ की कंपनी है ये, और फाउंडर जोधपुर से है। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इनकैश कर सकते हो। मैंने बताया कि कुछ ये लोग हैं जो हमारे साथ हमारी स्टार्टअप्स में एक्टिवेट करते हैं, और वो भी जोधपुर बेस्ड स्टार्टअप्स में भी करते हैं, जिसमें क्रेड के फाउंडर हैं, कैलाश खेर है, कुमार विश्वास है, सिद्धार्थ है। तो बहुत अच्छे लोग करते हैं। हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर everybody. But we are ready to give you a mentorship, we are ready to give you financial assistance, we are ready to do consulting, incubation, and today we are signing a MOU with the Ayurved University so that we can do this actively on a regular basis. The floor is open. किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहता हो, तो you can please. No questions? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरैक्टिव होना चाहिए। सर, आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज, अदरवाइज वी कैन। सर, एक क्वेश्चन मेरा है। बिल्कुल। एनी टाइम होता है कि हमारे गुजरात में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन आइडियाज सस्टेनेबल है कि नहीं है इसका कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं पाता। सर, तो मैक्सिमम टाइम वो जहाँ सोचते हैं उस हिसाब से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब उसको कैसे हम एनालाइज करें कि नहीं ये आइडिया ठीक है, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सर, तो मैंने जो ये चार्ट बताया था, इसमें यही बताया था कि अगर आपके मन में बहुत सारी आइडियाज हैं, किस आइडिया पे काम किया जाए, या कौन सा आइडिया सस्टेनेबल है और कौन सा ग्रोथ के लिए है, उसके लिए प्री इंक्यूबेशन एक स्टेज होती है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं जोधपुर की बात करता हूँ, तो हम लोग हर महीने कुछ एक्सपर्ट्स को जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, उनको अपने ऑफिस में बैठाते हैं, और जितने भी स्टार्टअप्स हैं अक्रॉस द सेक्टर, दे कम एंड दे डिस्कस कि ये आइडिया पे काम करो। अगर किसी के पास कंफ्यूजन है कि मेरे पास 3 आइडिया है, तो आ जाओ, बैठते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक एक्टिविटी बोली है जिसका नाम है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, है ना। ये उनकी एक नीति आयोग की एक पॉलिसी है, जिसमें वो लोग ऐसे सेंटर्स अक्रॉस इंडिया उन्होंने बनाए हैं, जहाँ पर वो एक्सपर्ट्स हर महीने बैठते हैं, और वहाँ आके आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, और वो आपको एक गाइड करते हैं। अच्छा, काम क्या करना है वो तो फाउंडर को डिसाइड करना है, बट एटलीस्ट यू गेट अ क्लैरिटी। तो ये स्टेज है पहला। और मुझे लगता है इंक्यूबेशन सेंटर का भी यही काम है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाना है, तो उसका मतलब एक्टिवली रोल करना है। तो उसका पर्पज ये है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज चलाई है, जिन्होंने ग्लोबल एक्सपोजर किया है, वो आपके इंक्यूबेशन सेंटर में आएंगे। जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्टअप किए हुए हैं, जिन्होंने उनको ग्लोबली लिया है, वो आपको थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। अगर आपने क्लियर कर लिया कि मुझे इसी डोमेन में काम करना है, तो उसका शायद रोड मैप थोड़ा स्मूथिंग कर दें। और अगर उनको लगता है कि इसकी जगह इसको थोड़ा सा पिवट कर सकते हैं, तो वो पिवट करने के लिए भी बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आइडिया अच्छा लगता है, तो वो यूजुअली आजकल जो अभी लेटेस्ट कल्चर है इंडिया में, उसमें वो लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं। सो आई थिंक प्री इंक्यूबेशन इज द राइट फेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम एंड पार्टिसिपेट। प्री इंक्यूबेशन यूजुअली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होता है, और एक्सेलरेटर फिर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई मैंने बोला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको अपने को समझना है। सर, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि जनरली क्या होता है, ये बच्चे जितने डिमोरलाइज हो जाते हैं। जनरली 80% स्टार्टअप जो है फेल हो जा रहे हैं, ऐसा डाटा आ रहा है, लेकिन 80% के पीछे वो नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सर, सबसे पहली बात तो ये मिथ है कि 80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका आइडिया है, अगर मेरे मन में कोई आइडिया है और मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, और वो मुझे लगता है 3 में से, तो
इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं सर। स्टूडेंट लाइफ में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपको इन्वेस्टर के पास नहीं जाना है, आपको इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाना है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने भी ये मिस्टेक की थी, जब मैंने मेरी स्टार्टअप शुरू की तो मुझे लगा मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं सीधे इन्वेस्टर्स को चेज करने लगा। इन्वेस्टर्स डोंट कम अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड। सो आज सीधे हम लोग 5th के बाद ग्रेजुएशन में नहीं डालते ना सर, 6th 7th 12th करके फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। सो ये वही बिजनेस इज ऑल्सो सिमिलर, ओनली इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपके मन में कोई आइडिया है तो सबसे पहले आपको प्री इंक्यूबेशन में जाके उसको वैलिडेट कराना है, पॉइंट नंबर 1, जिसको आप प्री प्राइमरी कह सकते हैं। फिर आपको प्राइमरी सेक्शन में जाना है, उसका मतलब है कि आपको इंक्यूबेशन सेंटर में जाना है, उसको लीगली स्ट्रक्चर करना है। किस फाउंडर के पास कितनी इक्विटी है, मेन फाउंडर कौन है, आपके फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट फाइनल हुआ है कि नहीं, जिसको हम ई शॉप्स बोलते हैं, एम्प्लॉय शेयर्स बोलते हैं। एम्प्लॉय शेयर्स आपके पास है कि नहीं, अगर ये सब छोटी छोटी चीजें आपके पास होती है तो आपका जो इन्वेस्टर स्मार्ट है, वो पैसे बनाने के लिए आया है, वो आपको गाइड करने के लिए आया है। और शायद इसीलिए हम लोगों ने इन्वेस्टर में भी एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए। एंजल इन्वेस्टर यूजुअली कौन होता है, जो आपको पैसा भी देता है और गाइड भी करता है कि यार इसके बाद आप इन 2 लोगों से मिल लो, या इस जगह से प्रीमियम कस्टमर दिला लो, या ये लो। मैंने इसलिए बोला कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके पास ये बहुत सारे वैलिडेशन है सर। आपको प्रीमियम कस्टमर लाना, हो सकता है एक स्टूडेंट नहीं ले पाए, लेकिन सर आप या मेरे जैसा कोई आदमी किसी को कॉल करेगा तो आप ना सामान बेचा, पर किसको बेचा, अगर वो राइट आदमी बताए तो इसका मतलब आपका आइडिया वैलिडेट हो जाता है। आप किसके अंदर में रिसर्च कर रहे हो, वो आइडिया वैलिडेट होता है। आपको ब्रांडिंग में हेल्प मिलती है, आपको मीडिया में हेल्प मिलती है। मैंने बोला आयुर्वेदा में जितना काम चल रहा है शायद, और कितनी इसकी जरूरत है, वो हम सब इसको वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन उसको मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी। अगर मैं जोधपुर में बैठ के अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं क्रंच बेस पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मजा नहीं आएगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, फोर्ब्स दिसंबर 15 को जो फोर्ब्स की मैगजीन फोर्ब्स इंडिया आई, उसमें मेरा आर्टिकल आया। तो क्यों आया, क्योंकि मेरे एंजल इन्वेस्टर अच्छे हैं, ही हैज कनेक्टेड मी टू द एडिटोरियल। यू कैन नॉट परचेज, आप 20 लाख 25 लाख रुपए देके कर नहीं सकते हो, पर अगर एडिटोरियल आता है तो राइट आदमी से फर्स्ट चेक लेना, वो इंक्यूबेशन सेंटर का काम है। तो इंक्यूबेशन सेंटर का जो इंचार्ज है उसका बहुत बड़ा रोल है किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, और को इन्वेस्टर लाना, ब्रांड करना, फंड रेज करना, स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप करना, लीगली स्ट्रक्चर करना, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है। अगर इन पे ध्यान रखा जाएगा तो ये फेलियर रेशियो जो आप 80% बोल रहे हो, आई थिंक इट विल रिड्यूस टू 70%। एंड फाइनली आई से फाउंडर्स डोंट फेल, आइडियाज फेल। आइडिया फेल हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। फाउंडर की सक्सेस रेशियो 80% है सर, आइडिया की सक्सेस रेशियो शायद 20% हो सकती है, लेकिन फाउंडर की सक्सेस रेशियो 80% होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पहला आइडिया शुरू किया, फेल हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 इन्वेस्टमेंट मेरे फेल हुए। मैं बता रहा हूँ 2018 से 2019 में जब ये ग्रिप समझ में आ गई कि क्या होता है, तब से 70 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और 4 आइडियाज फेल हुए। Anybody else? Thank you so much, sir. Thank you. So, thank you, Sushil ji, for sensitizing us. Now I am handing over the podium to Dr. Chaha, sir. थैंक यू मैम। अब मैं हमारे सभी कीनोट स्पीकर्स के और हमारे गेस्ट लेक्चर जो थी उनके समापन के बाद में इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शिशिर प्रसाद, हमारे जो को चेयरपर्सन हैं आज के, डॉक्टर शिशिर प्रसाद प्लीज़। Respected Chairperson of the session, Professor Ved Prakash Sharma, sir. Guest of honor, Dr. Girdhar Gopal Sharma, sir. And the respected keynote speakers, Professor G.P. Garg, sir, Professor B.S. Sharma, sir, Dr. Kaushalya Senani Bandara, ma'am, Dr. Venkatan Joshi, sir, and Mr. Sushil Sharma. And of course, the Honorable Vice Chancellor who is sitting in the back. Very good afternoon to all of you. I'm basically not a man of Kaumara Bhritya.
but I have been entrusted the task to co-chair this session today. So I will make it the summary a brief and short one, because many of the dignitaries you are present here. So today's session, the first speaker, Professor G.P. Garg sir, spoke about millets and its importance. And I can tell you from my personal experience that when I was in Australia, in Melbourne and Perth, so both the places, the Indian embassies I visited, and they were having samples of millets placed there. And many people from foreign countries, the local people, can actually see and understand what millets are. And regular talks are being conducted on millets in different parts of the world, including Portugal also recently when I was there. Similarly, in many Indian embassies, the government of India is promoting the use of millets, and we in Ayurveda have always talked the importance of millets. It's a very relevant topic and very, very important one. Professor B.S. Sharma sir is a very senior professor of pediatrics, and he emphasized the integration of Ayurveda and modern medicine. And in Ayurveda, we know that there is a shlok that says that Shukrashonitam garbhashastam atma prakriti vikar samuchatam garbheti uchate tam chetanavasthitam vayu vibhajeti teja enam pachati apah kledyanti prithvi sanghanti akasham vivardhayati. So here they are saying about how the sperm and ova combines in the womb, and then the consciousness enters the womb, and then how the Vayu element is responsible for cellular differentiation, and then to say in a broad term basically, and then Pit or the fire element, how it is responsible for the catabolic activities, and how the Apa, the next universal feature, is responsible for giving it lubrication, and then how the earth element is giving it the shape and form, and how the air element, the fifth element, which we say is responsible for the growth of the fetus. So the universal concepts, whether it was 10,000 years back or whether it will be 10,000 years after, will remain unchanged. And this is one of the reasons why our science, the Ayurvedic science, which is based on these universal concepts, have understood the test of time. And that is why I generally prefer to call our science, the Ayurvedic science, as comprehensive science, not complementary or an alternative science. We are a comprehensive science, and other sciences have developed as complementary to us, and we are not alternatives. And this is what we, being in Ayurvedic field, need to emphasize, this fact that we have always been there and understood the test of time, because our fundamentals are very, very basic and ever relevant. So yes, we do understand that there is a need of integration, as our acharyas have also mentioned that ekam shastram adhyano na vidyat shastra nishya. So you have to understand different sciences and then progress together, as it is an interdependent science and an interdependent society. So we have to progress together for the benefit of everyone, as Sir has emphasized as well. And Dr. Kaushalya Senani's madam, she also talked about the presence of Ayurveda and the recent research and updates in pediatric patients through Ayurveda in Sri Lanka. And she mentioned that grandparents are the best pediatricians, and that is quite true, and we have always understood, and like we were always doing those abhyanga for the grandparents do that, and not only the children who get benefited out of that care, the grandparents also get benefited out of taking care of the children, because those form of energy that they have is the positive energy, and which is unflowable, and which is actually very, very pure. The children have the best positive energy, and that is why when you said that you go and hug a child, you get that energy, you release the negative energy and gain positive energy. And the researchers have also shown that even if you hug a tree, right, a growing tree,
you just hug, and then that positive energy of the growing tree helps you improve your own health. So it is quite relevant and very, very important. And also regarding the different herbs that you mentioned about Rath Kalpa, and we also know about one of the drugs used in Sri Lanka, which is Katupila. It is used in wound healing quite remarkably. And so we have learned and understood again the seed, as you mentioned, that the uses were there more than thousands of years back in your text, and still the same results we are able to attain. Regarding honey as well as what mentioned recently, there was a paper published about use of honey in wound healing, as I remember, where in All India Institute of Medical Sciences, Delhi, where they compared it with povidone iodine and found that the wound dressings with honey is equally effective or more effective than even povidone iodine. So yeah, we have understood, or we have been tested over times, and we have produced results. Dr. Venkat Joshi sir also mentioned about the contribution of Ayurveda and child health care, and he talked very, very powerfully, and his speech was full of energy. And yeah, we know that since we have traveled from different continents, and I see patients from different parts of the world, and yeah, I've seen the changes in the people, basically, even though there are some countries, or I should say there are many countries who are not recognizing us as a medical care system, but the public there as such are looking for us to deliver the goods. So it is the public who wants it, and if it is an individual's choice of drug, and then they want to get something, the countries or the laws cannot prevent it, because it is health is an individualistic sign. So yeah, it is growing world over. And then Mr. Sushil Sharma has mentioned about the startups. The startups is helping us to take it more and more down to earth people, every part of the villages as well, because ultimately we have to reach the needy and the ones who actually require it to the larger extent, and who cannot afford even breads sometimes. We have to deliver to them also. So regarding that, I will just mention about some of the aspects, because I have been treating patients with Marma science, which is an important aspect of Ayurveda. So this is a non-pharmacological intervention which can be taught to the patients to help themselves for self-care. And this is what I have been doing, and cost-effective and rapid-acting ways. And there's a lot of scope in pediatric patients as well that we have seen in our hospitals, and feedbacks from different patients and feedbacks from the practitioners who are doing it now. Thank you. Thank you, sir. And yeah, thank you, the organizers, for inviting me. Thank you, the Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you, Professor Harishankar Sharma, sir. Thank you all. थैंक यू डॉक्टर शशि प्रसाद जी। अब मैं आज के इस सेशन के चेयरपर्सन श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं, गुरुजी इस सेशन को कंक्लूड करें प्लीज। गुरुजी वेद प्रकाश जी शर्मा सर। श्रेयांसी बहुविघ्नानी 9 बजे से 11 बजे तक का ये सेशन था, तो बहुत अधिक विलंब हो गया, उसके लिए खेद है। सूर्यनगरी, मरुभूमि और जोधा जी के द्वारा स्थापित जोधपुर में समायोजित कौमार भृत्य कौम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर प्रसन्नता है। किस बात की प्रसन्नता है कि अभी प्रतीक्षित नववर्ष और मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मैं हमारे माननीय मनीषी प्रोफेसर हरिशंकर जी
के गरिमामय सानिध्य में उनको नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धताम् इति कामये। मकर संक्रांति में सूर्य की जैसे वृद्धि होती है उसी प्रकार से आपका तेज भी बढ़े, ये मेरी कामना है। बाल संरक्षण के लिए यह जो कॉन्फ्रेंस है हमारे राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन करते हुए सूर्य के संदर्भ में कहा कि यह सूर्य नगरी है, सूर्य की साधना के द्वारा विटामिन डी की उत्पत्ति होती है, यह उनका निर्देश रहा। वस्तुतः बालक के संदर्भ में चर्चा करना और बालक की स्थिति का यदि अवलोकन करें तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस बात का? बच्चा जो होता है वह बालक राष्ट्र की निधि होती है। बालम बलम ही राष्ट्रस्य। दूसरी चीज़ कि बाल बिल्कुल निर्बल होता है, बलहीन होता है बिल्कुल किसी प्रकार का, तो और उसका सबसे बड़ा बल बच्चे का क्या है? रोदनम ही बलम बालम। बच्चे का सबसे बड़ा जो बल होता है वह रोता है, रोना ही उसका बल है। और रोने के परिणाम स्वरूप जो क्राइंग इज द क्योर, अपना जो रोने के द्वारा उसका माता स्तनपान करवाती है किसी प्रकार का हो, वह रोदन ही बोल होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बलहीन बालक जिसका बल केवल रोना ही है वह हमारी राष्ट्र की धरोहर है। बलम ही राष्ट्रस्य। उसकी यदि हम स्थिति को देखें तो अवस्था प्रारंभ से लेकर के जहाँ पर ओवम है, फीटस है, प्रेगनेंसी के साथ में जो स्थितियाँ होती हैं और प्रसव के समय में जो उसकी स्थितियाँ होती है वह ईश्वराधीन ही होती है। एक प्रकार से बहुत कष्ट होता है, माता को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है। और बच्चे को कष्ट होने के साथ में कुछ ट्रोमेटिक के कारण से या नियोनोलस एस्फिक्सिया आदि के कारण से अनेक प्रकार के डिसऑर्डर्स होते सकते हैं। उनका जो उपाय है, उनके उपाय में एक ही उपाय माना जाता है कि बच्चा राष्ट्र की धरोहर किस प्रकार का? ए सिक चाइल्ड इज़ द लाइबिलिटी टू द कम्युनिटी। और दूसरा जो हेल्दी चाइल्ड होता है, हेल्दी चाइल्ड इज एन एसेट। तो यह जो बच्चा होता है यह संरक्षित किस प्रकार को, राष्ट्र के बल की धरोहर को कैसे रखे, तो यदि ज़्यादा परिप्रेक्ष्य में नहीं जानना चाहता मैं, परंतु WHO से, यूनिसेफ से, भारत सरकार से, विदेशों से भी इस बाल संरक्षण के लिए, चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए अनेक प्रकार के प्रोग्राम हुए। अनेक प्रकार के प्रोग्राम के साथ में जहाँ पर हेल्थ के संदर्भ में रहा, एल्मा मेटा एजा से भी रहा कि 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए। तो जिस प्रकार से हमारा सेशन बहुत अधिक डिले होता जा रहा है तो 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए रहे, वह 2000 का 23 हो गया, तो सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल यह संभव नहीं रह पाता। वस्तुतः यह प्रयास रह रहा है कि मदर एंड चाइल्ड के लिए कितना प्रयास किया जाए, किस प्रकार का प्रयास किया है। गाइडलाइंस भी बने, प्रोजेक्ट्स भी बने, WHO से बने, भारत सरकार परिश्रम कर रहे हैं, परंतु बड़ी प्रकार की समस्याएं हैं। और समस्याएं में बच्चे को जो रोगों को देखें, बच्चे की स्थिति को देखें, एक प्रकार की अवस्था नहीं है। बच्चे का जन्मजात शिशु से आगे की गर्भावस्था को छोड़ें, जन्मजात के बाद में भी जो इन्फेंट है, इन्फेंट होने के बाद में प्री स्कूल एज है, स्कूल एज है, बाद में एडोलसेंस है, तो सब में उसमें हाव भाव, शारीरिक मानसिक सब में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का किस प्रकार के विश्लेषण किया जाए, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है। इस बच्चे के संदर्भ को लेकर के जो उपाय किए जा सकते हैं, वह उपाय सबसे बड़ा उपाय है कि यह बच्चा का एक सिद्धांत माना जाता है, और वह सिद्धांत में ये टॉक टू बेबी,
बच्चे को टॉक टू बेबी, उससे स्नेह रखें, मिलें करें, परंतु स्थिति इस प्रकार का है कि यह जो मोबाइल का क्रम चल गया, इस मोबाइल के संदर्भ में बच्चे को माता का स्नेह टच टू बेडी, तो उसको टॉक टू बेडी, बच्चे को बात करना, उसका बोलना करना, बच्चे से ले लेना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परंतु समय किसको है? यह जोधपुर क्षेत्र है, इसमें भी और दूसरे क्षेत्रों में भी अफीम का प्रयोग होता था। बहुत पहले बच्चे को माता अफीम दे देती थी, सुल जाता था, फिर अपने काम करती थी। और आजकल क्या है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा अपना काम करे। तो ये है जो टॉक टू बेबी वाली बात है कि माता बात नहीं करती, वो मोबाइल है उसी से बात करवाने की बात है। तो इसमें यह एक सिद्धांत माना जाता है कि अर्ली इंटरवेंशनल थेरापी, अर्ली इंटरवेंशनल थेरापी संभावना रहती है प्रसव होने के बाद में बच्चे में एक प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये मस्तिष्क संबंधी, शारीरिक संबंधी अनेक प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। इस डिसऑर्डर्स के बचाव के लिए सबसे बड़ा जो उपाय माना जाता है कि उसका उपाय यही है कि बच्चे को उपाय की दृष्टि से यहाँ पर बच्चे को उसका स्नेह करे। जैसे कंगारू होता है, बच्चे को गोद में ले जाता है, बच्चे को मदद लिया जाता है, इसी प्रकार से टॉक टू बेबी, बच्चे से बात करें। उससे बात करने पर बहुत रोगों का शमन हो सकता है। इस सिद्धांत को आयुर्वेद की दृष्टि से या वैसे देखा जाए तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद। आधुनिक सिद्धांत केवल इतना ही मानता है कि सूर्य के द्वारा हमें विटामिन डी मिलता है, या इन अल्ट्रावायोलेट रेज जो होता है उससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। परंतु मैं थोड़ा ये रिसेंट एडवांस जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, रिसेंट एडवांसमेंट, तो इस एडवांस में एंशिएंट एडवांसमेंट में जाना चाहता हूँ। एंशिएंट एडवांसमेंट में इतना ही जाना चाहता हूँ कि वर्तमान केवल इतना मिलता है कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज होती हैं, उन अल्ट्रावायोलेट से विटामिन डी मिलता है। परंतु हमारा जो एंशिएंट सूर्य है वह वेदों से उत्पन्न है वर्णन। उस वेद में यदि देखें तो सूर्य सन जो है वो सन एक ही नाम है, परंतु हमारे यहाँ जो सन है वो कहीं तो द्वादश आते हैं, 12 सूर्य हैं। 12 सूर्य के साथ में यदि वो सूत्रों को देखते हैं, सप्तति सूर्य है, 70 प्रकार के सूत्र हैं, सूर्य हैं, उसके हजारों नाम है सूर्य के। तो यह स्थिति कहाँ तो एक वसन केवल विटामिन डी देने वाला जो सूर्य है, और कहाँ हमारे शास्त्र नाम वाला जो सूर्य है वह कैसा सूर्य है। एक ही 7 किरणें मानी जाती हैं, परंतु इनसे सहस्रार रश्मियाँ, हजारों किरणें होती हैं, सूर्य की हजारों किरणें मानते हैं। इस हजारों किरणों की स्थिति और केवल इंफ्रावायोलेट रेज की 4 की स्थिति, ये एक बहुत बड़ा वैदिक विचारणीय दृष्टिकोण है। और वह वैदिक विचारणीय दृष्टिकोण से सूर्य का संबंध किससे है? चक्षुर आदित्य अजायत है, सूर्य अजायत है, चक्षु के द्वारा, तो चक्षु का, नेत्रों का और सूर्य का संबंध है। इसी तरह से जो त्वचा का संबंध है वो सूर्य के सामने है, और त्वचा का संबंध से विटामिन डी का जहाँ पर प्रसंग माना, तो सूर्य क्या है, किस प्रकार का सूर्य होता है? तो ये सूर्य जगत का प्रभु है, सभी प्रकार का है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय का भी वाला सूर्य है। यह जो सूर्य है, इस सूर्य में माना जाता है कि आपह होता है, जल होता है, और जल कहाँ पर? अंतरिक्ष में जल रहता है। अंतरिक्ष में जो जल है वो हमारे शरीर में अंतरिक्ष के जल के अंदर सहस्त्रों किरण होने के साथ में, और वहाँ पर एक प्रकार से जो आप है यह दिव्य जल होता है, अमृत को प्राप्त करने वाला जल होता है, दिव्य जल होता है। और यह जो दिव्य है उसी को एक तरह से माना अपाम भेषजम, जो जल है अपाम भेषज, औषध के रूप में है। यह औषध किस प्रकार की है? अमृत को देने वाली है, अमर बनाने वाली है, निरोग को देने वाली है। परंतु अमर तो नहीं हो, कम से कम निरोगी तो रहें, स्वस्थ तो रहें। यह इस सूर्य के द्वारा आराधना से हमें कुछ संभव हो सकता है।
और आराधना से संभव किस प्रकार का, जहाँ पर सूर्य का जो आप है, जल है, अंतरिक्ष में रहने वाला, उसके अंदर दिव्य शक्ति होती है, अमृतत्व की शक्ति होती है। ये अमृत की शक्ति सूर्य से हमारे अंदर आती है, शरीर में पहुंचती है त्वचा के द्वारा और नेत्रों के द्वारा, केवल त्वचा के द्वारा ही, नेत्रों के द्वारा शरीर में पहुंचती है। नेत्रों के द्वारा पर यह जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति देने वाला होता है। प्राण शक्ति के साथ में मेधा वर्धक होता है, बुद्धि वर्धक होता है, और बुद्धि वर्धक के साथ में शरीर के अंदर किसी प्रकार का विकृति के परिणाम स्वरूप है तो उसको रोकने का कार्य होता है। कैसे रोकता है? सूर्य के साथ में वहाँ पर आप है, जो जल है सूर्यास्त का, उस सूर्य के जल के साथ में यहाँ पर वरुण की स्थिति होती है। और वरुण जो राजा है, वरुण, वह राजा हमारे शरीर में वरुण के साथ में स्वरूप क्या है, व्यान वायु शरीरस्थ रहती है, पूरे शरीर व्यान वायु रहते हैं, तो व्यान वायु के द्वारा हमारे पूरे शरीर में संचरण करता है। षष्ठी का क्रम जो है वह षष्ठी का क्रम अग्नि सोमात्मक जगत, अग्नि सोमात्मक, अग्नि और सोम जल के द्वारा। तो यहाँ जो स्थिति है वह सूर्य आग्नेय स्वरूप है, उसमें रहने वाला जो वरुण है, वह जो वरुण है वो सोम स्वरूप है, जल स्वरूप होता है। तो यह जो सूर्यस्थ आप है, जल है, यह जल एक प्रकार से हमारे लिए प्राण शक्ति होता है, व्यान वायु के द्वारा समस्त शरीर के अंदर जाता है, और समस्त शरीर के अंदर जाते हुए त्वचा से भी जाता है और नेत्रों से भी जाता है। त्वचा में जाने के बाद केवल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, विटामिन डी का पूर्ण रूप, वह इंट्रावायलेट से त्वचा में जाकर के विटामिन डी में परिवर्तन होता है केवल वहाँ पर। परंतु यहाँ पर तो यह है जो सूर्य के रश्मि से आने वाला केवल विटामिन डी नहीं देखता, प्राण शक्ति देने वाला है, और उस प्राण शक्ति के देने के साथ साथ में हमें मेधा शक्ति को वृद्धि करता है, अजरामृतत्व को प्राप्त करता है। आराधना के क्रम में अनेक प्रकार से कुछ बताए हैं क्रम, और अनेक प्रकार के क्रम बताने के बाद में मैं 2 बातों पर विश्लेषण करना चाहूँगा। एक तो जो नेत्र शक्ति होती है, वह नेत्र शक्ति आजकल के मोबाइल के परिणामों स्वरूप बच्चों में भी चश्मा जल्दी लग जाता है, उसी के साथ में ये नेत्र की ज्योति कैसे बनी रहे, यह सूर्य के आराधना के क्रम में एक तरह से बताया। दूसरा, मेधा की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, हमारा बच्चा कैसे इंटेलिजेंट हो और यह कंपटीशंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में से कैसे आगे बढ़े। ऐसे जो प्रयोग हैं सूर्य के इस अपाम भेषजन के कारण, इस सूर्य के अपाम भेषजन से अनेक प्रकार का हम उपयोग कर सकते हैं। किसका क्रम बताया है यहाँ पर, क्योंकि मैं अधिक विस्तार से नहीं जानना चाहता। एक है सूर्य अर्घदान, सूर्य को अर्घदान, एक तरह से गैस में टकटकी लगा करके सूर्य को देखा जाए और सूर्य को अर्घदान करके बाद में, तो ये सप्तमी 70 सूर्य के नाम है, उसका एक एक नाम के उच्चारण करते हुए और सूर्य को अर्घ दिया जाए। तो सूर्य अर्घ है, सूर्य अर्घ दानम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी रोगों को दूर करने वाला होता है सूर्य को दिया हुआ अर्घ। यह सप्तमी कैसे होता है, ये किस प्रकार से ये दूर करने वाला होता है, और केवल 70 नाम उच्चारण करने से उसका फल कैसे मिल जाता है। यह सभी व्याधियों को रोकने वाला होता है, और रोकने के साथ में बिना वैद्यर बिना औषधे, बिना औषध के और बिना वैद्य के सूर्याग्रदानम, और ये मेधा शक्ति को जीवनी शक्ति देने वाला होता है। ऐसे एक प्रकार का क्रम और है, ये जो प्रज्ञावर्धन, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो स्कंद होता है उसके स्कंद का स्मरण किया जाता है, और स्कंद का जो स्मरण करते हैं वह बुद्धि कैसी बुद्धि बढ़ाता है। उसमें बुद्धि में के लिए इस बार बताया कि इस अर्घ के मतलब सूर्य के नाम उच्चारण से ही, और जो बिल्कुल अबोध होता है वह जो किसी प्रकार का, वह वाचस मूको भी वाचस्पतिर भवेत, वह मूक जो गूंगा होता है वह वाचस्पति हो जाता है, बोलने वाला होता है इनकी आराधना का। अब ये एक थोड़ा सा विचार करने की बात है कि क्या ये कपोल कल्पना ही तो नहीं है, परंतु इसका मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ कि सूर्य के नाम उच्चारण से
और उसके स्कंद के नाम के उच्चारण से हमें मेधा शक्ति, जीवनी शक्ति, नेत्र ज्योति, तमसोमा ज्योतिर्गमय कैसे होता है, उसमें यहाँ पर केवल नाम करने का एक केवल उदाहरण देना चाहता हूँ। मोबाइल है, मोबाइल में एक प्रोग्राम है असिस्टेंट। उस असिस्टेंट में बोल करके हमें बोला उसमें कि हमें अमुक मेडिसिन का इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसका काउंटर इफेक्ट है या अमुक कोई बात है, उसका तुरंत ही वो बता देता है। तो ऐसे ही भगवान मतलब कहाँ से तुरंत ही मोबाइल में बोला असिस्टेंट पे कि ये हमें खोज करना कि ये शब्द बताओ, हमारी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, उसमें कितने डेलीगेट्स आ रहे, तुरंत ही आपका उसका रेस्पॉन्स तुरंत ही क्षण के अंदर। तो जहाँ पर निर्जीव चीज़ में इस प्रकार की व्यवस्था है तो ये जगत का पति जो है ईश्वर और या सूर्य जो है आराध्य प्राण का स्थान है, उसको केवल बोलने से नामोच्चारण के उसका फल क्या नहीं मिलेगा, उसका रेस्पॉन्स क्या नहीं, प्रत्येक एक क्षण भी नहीं लगता मोबाइल असिस्टेंट में बोलने पर। तो ऐसे सूर्य का आधान का रहा। ऐसे एक क्रम होता है चाक्षुषी विद्या, चक्षु की ज्योति बढ़ाने के लिए। और चक्षुषी विद्या, चाक्षुषी विद्या नेत्र की ज्योति, और नेत्र की ज्योति बढ़ाने कैसा कि मैं अंधा नहीं हूँ और मेरे कुल में भी कोई अंधा नहीं हो और मेरी ज्योति हमें निरंतर बढ़ती रहे। और निरंतर बढ़ती हुई यह ज्योति जो है वह निरंतर बोली इसी ज्योति के क्रम में बताया तमस और माँ ज्योतिर्गमय है। वहाँ पर ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये बुद्धिवर्धक ज्योति है। यह क्रम यहाँ पर विशेष रूप से उसमें बताया है। तो इनका सूर्य की केवल आराधना करते हैं। बच्चों को भी टकटकी लगाने से देखने पर एक प्रकार का उसका लाभ मिलता है। विटामिन डी का और सारे के सारे तत्व इसमें मिलता है। कितने प्रकार के तत्व होते हैं, कैसे तत्व होते हैं, उस ऋषि परंपरा का बड़ा एक प्रकार से देन है और उनकी समझ में नहीं आता क्या विलक्षण बुद्धि थी। कोई किसी प्रकार के साधन नहीं थे जानकारी के, इन्वेस्टिगेशन के, कोई वहाँ पर सोनोग्राफी वाला भी नहीं था, किसी तरह का नहीं था, कोई इतना एडवांस मतलब एडवांस नहीं था। परंतु वहाँ पर उन्होंने कैसा प्रयोग किया, अपनी जो दिव्य दृष्टि है उस दिव्य दृष्टि को देखते हुए उन्होंने बताया कि हमारे शरीर हृदय के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। नर 72 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, उसमें 100 उनके आगे विशेषण कर। तो यहाँ पर करोड़, हजार नहीं, 32,000 मतलब करोड़ इतनी नाड़ियाँ। कैसे पता लगाया हमारे नाड़ियाँ किस प्रकार की होती है, वो क्या करती हैं, आदान प्रकार में सारी शरीर की स्थिति यहाँ पर रहती है। तो ये विलक्षण विधि शास्त्र की यहाँ रहा। तो इस आराधना करने पर हमें मेधा शक्ति एक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। मेधा शक्ति को यदि देखें, मेधा शक्ति को अथर्ववेद है, वो आयुर्वेद का एक प्रकार से उपजीवी है अथर्ववेद, और उपधर्व के साथ में आयुर्वेद को पंचम वेद भी माना है। वहाँ पर एक प्रकार का प्रसंग है, उनमें सूक्त में दिया है और उन सूक्त के अंदर 3 सूक्त दिए हैं, 3 मंत्र दिए हैं सूक्त के अंदर। प्रथम सूक्त में, उस सूक्त में ये देखे पुनरे हिमाम, वहाँ सूर्य से प्रार्थना की गई है कि आप बार बार आएँ, आप मेरे अंदर बार बार आए, मैं उनको आहूत करता हूँ, आप भी मुझे बुला रहे हैं मुझे कुछ देने के लिए। तो पुनरेहि और वाचस्पते देवेन मनसा है, यह जितने भी मनोकामना है हमारी, जितनी भी हमारी इच्छा हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आप पुनरेहि दोबारा आएँ, बार बार आएँ। और बार बार आने के साथ में वाचस्पते, वाचस्पति, और ये वाचस्पति है, यह वाचस्पति क्या है कि मय्ये वावस्तु मयि श्रुतम, जो मैंने पढ़ लिया है या जान लिया है मेरे अंदर बना रहे, तो मेरे अंदर हमेशा बना रहे। तो यह जो बुद्धि है, मेधा है, स्मृति है, सबको यहाँ पर बनाने के लिए उन्होंने दे दिया कि इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे आए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि यह जो आ गया मेरे में और मार्ग में ही दोबारा ये जाए नहीं, स्थिर रहे हमारे पास में, और ये हमारे स्थित में रहे। और स्थित होने के साथ में क्या है कि महाविरोधी भी परित्यक्त नहीं हो, मेरे से दूर नहीं हो, अलग नहीं हो, ऐसा निर्देश वहाँ पर दिया है कि इसको निर्देश करने पर हमारी जो बुद्धि शक्ति है वह हमारे अंदर बनी रहेगी, बुद्धि स्मृता बढ़ेगी, ये प्रकार की स्थिति रहेगी। तो यह बहुत विस्तार है, मैं आगे विस्तार में जाना नहीं चाहता। केवल इतना है कि जो शास्त्र का निर्देश है उसका कुछ पालन किया जा सकता है। हमारे कीनोट के लेक्चर्स विद्वत मनुष्यों के द्वारा दिया गया,
उनसे हमें लाभान्वित होते हैं। हमने सुपर फूड मिलिएट्स का रसास्वादन किया। इंटीग्रेशन एलोपैथिक एंड आयुर्वेद, उसके बारे में हमारे आत्मीय प्रोफेसर डॉक्टर BM शर्मा जी के द्वारा निर्दिष्ट करते हुए एक शब्द वहाँ पर रहा, कन्फ्लिक्ट इन एलोपैथिक एंड आयुर्वेद। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट किसी की तरह के बाद उनका भी ये था कि इंटीग्रेशन है, कोई कन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है। तो यह कन्फ्लिक्ट जो है, डिस्प्यूट या आपस में वैमत्य या दूर होने पर एक ही उपाय में है कि हमारे साधन के साथ में साधना भी रहे, चिंता के साथ में चिंतन भी रहे, दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण रहे। एलोपैथी और आयुर्वेद का विभेद नहीं है, एक मत है, एक स्वरूप है, उसको बढ़ाना चाहिए। हमारे लंका से आई हुई मैडम ने लंका की स्थिति को बताया, तो लंका की कौमार भर्ती की कॉन्फ्रेंस है, उस कौमार भर्ती की कॉन्फ्रेंस में इतना ही उदाहरण देना चाहूँगा कि जो बालतंत्र है वो रावणकृत है। बालतंत्र रावण का बनाया हुआ, लंका से बालतंत्र हमारे आया है। तो यह पारस्परिक देशों का एक प्रकार का सौभाग्य इस तरह का है। अंत में अधिक विस्तार से न जाते हुए एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि यह कॉन्फ्रेंस एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है, और वह ज्ञान यज्ञ है, वह ज्ञान यज्ञ भी किसके द्वारा प्रचलित, इस यूनिवर्सिटी कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, वो कुलपति होने के साथ में प्रजापति भी हैं। और वह जो प्रजापति है, ये प्रजापति यही से माना जाता है कि पंचम वेद, चारों वेदों का संकलन करते हुए जो पंचम वेद बताया, वह प्रजापति ने पंचम वेद बताया। ऐसे जो ब्रह्म संगीता है, वह ब्रह्म संगीता वह आगे जाकर के ब्रह्मा ने फिर प्रजापति को दिया। तो ये हमारे प्रजापति के माध्यम से यह जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वह बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर मैं भी नींव के पत्थर के रूप में इस विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। जो प्रथम एकेडमिक काउंसिल थी, उसके आधारभूत संरचना में एक सदस्य के रूप में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला, और उत्तरोत्तर यह संस्था विकसित हो रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम देश विदेश से आए हुए मनुष्यों के अनुभव का लाभ ले रहे हैं, और उस लाभ के साथ में हमारा उत्साह है कॉन्फ्रेंस के लिए। सबसे बड़ी सफलता तभी होती है कि हमारा जो उत्साह है कॉन्फ्रेंस का, वो आगे भविष्य में भी बना रहे। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं संदर्भ देना चाहूँगा कश्यप संहिता का। महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता लिखी। उस संहिता को लिखने के बाद में जो संक्षेप किया, वह जीवक ने संक्षेप किया। जीवक के बाद में उसका जो प्रतिसंस्कार है, वो वात्स ने किया। जीवक केवल 5 वर्ष का बच्चा था, और 5 वर्ष के बच्चे में बाल भाषितम, उस बच्चे के द्वारा बताया हुआ जो है, उसने अनुमोदन नहीं किया वहाँ पर ऋषियों ने। और अनुमोदन नहीं करने के बाद में उन्होंने माना कि सामान्यतः है कि जीवक छोटा 5 वर्ष का बच्चा है, हम उसकी बात को अनुमोदन नहीं, बाल भाषित है, इसके स्वीकार नहीं करेंगे। उस वहाँ पर यह प्रसंग है कि गंगा हृदय कनखले, गंगा हृदय कनखले, 5 वर्षीय बालक है जो यह है, जो 5 वर्ष का बालक है, वह गंगा के उसके हृदय के द्वारा वहाँ पर निमग्न है। 5 वर्षीय बालक है, उस गंगा के में उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते हुए बलि पलित ग्रसित सफ़ेद और मतलब बाल हो गए, गुंजापन हो गया, वृद्ध का स्वरूप हो गया, और बलि होने का उन्मज्ज मुहूर्ता एक क्षण के अंदर डुबकी लगाते निकल गया। बच्चा निकलते हुए उसके वृद्धा स्वरूप हो गया, बाल बुल सब सफ़ेद हो गए। यह स्थिति रही। तो इस स्थिति के द्वारा मैं तो अपनी मान्यता दूसरे ढंग से देता हूँ कि यह मुझे ऊर्जा मिली है।
इस ऊर्जा में यह जो वृद्ध है वह भी आजकल जीव कौमार हो गया है बाल रोग के अंदर, तो यह मुझे एक प्रकार की ऊर्जा है। तो मैं बहुत बड़ा आभार करता हूँ और सबकी मंगल कामना करता हूँ। बहुत अधिक समय ले गया मिला हमें, बड़ा व्यवस्था में आगे भी इनको करना है, इसलिए थोड़ा खेद है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रकार का सानिध्य बने रहे, स्वस्थ सब प्रकार का कल्याण रहे, मातृ पितृ और जगत परुषेभ्य मनुष्यों के लिए सबका कल्याण हो। जय। थैंक यू श्रद्धेय गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ के चेयरपर्सन श्रद्धेय गुरु जी के मूवमेंट ऑफ एंड करने के लिए श्रद्धेय गुरु जी वीसी साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरा विनम्र आग्रह है गुरु जी से, प्लीज़ आप स्टेज पे पधारने का कष्ट करें। और आज के हमारे चेयरपर्सन कि उन्होंने कहा है कि कुलपति और प्रजापति आप ही हैं। इस महायज्ञ में डुबकी लगा करके ये व्रत भी युवक बन गया। ये डॉक्टर शिशिर के मोमेंटो और प्रमाण पत्र देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजाराम जी अग्रवाल सर। डॉक्टर राजाराम जी अग्रवाल। मेरा विनम्र आग्रह है प्रोफेसर शंभू दयाल शर्मा सर से, कृपया आप स्टेज पर पधारें। और मेरा चेयरपर्सन गुरुजी से भी आग्रह है कि हमारे बीएस शर्मा सर को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें प्लीज़। मंचस्थ सभी अतिथि प्लीज़। श्रद्धेय गुरुजी, चेयरपर्सन हमारे से आग्रह है कि गिरिराज प्रसाद गर्ग सर को भी मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करें, साथ में सम्मानित मंच भी प्लीज़। नेक्स्ट सम्मानित मंच के साथ डॉक्टर कौशल्या जी को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करने के लिए डॉक्टर रश्मि जी प्लीज। हमारे आज के विशिष्ट वक्ता मिस्टर सुशील शर्मा जी के मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित करने के लिए मंचस्थ अतिथि और श्रद्धेय गुरु जी से मैं निवेदन करता हूं।
गर्ग सर आपका Now I request Dr. Rajaramji sir to give memento and certificate to coordinator Dr. Chahar sir. Once again, I request coordinator Dr. Devendra Chahar sir to give memento and certificate to Dr. Yashasvi. आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं समस्त मंचस्थ श्रद्धेय अतिथियों का सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम करते हुए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अमूल्य समय दिया, यहाँ पधारे, हमें आशीर्वाद प्रदान किया। साथ में ऑडियंस जिन्होंने तत्चित्त होकर के तन्मय पूर्वक सभी व्याख्यानों को सुना और अपनी फीडबैक दिए, और साथ में जितने भी मेरे सहयोगी हैं उन सब ने इस पूरे मंच के साथ साथ ऑडियंस के साथ साथ इस सत्र के संचालन में मेरे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प की। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमन। सर मोबाइल मोबाइल आपका तो नहीं?